Assalamualaikum, sir. Sir, what is अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है आवाज़ मेरी माइक की? about it? Okay, how are you, sir? मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे? Allah Shukr. Sir, we're gonna start at 8, okay? We're waiting for the participants to हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है।
Okay, guys, we're officially gonna start. Dr. Ali, can you hear me? I can hear you. Yeah. Okay. Assalamualaikum everyone. My name is Aliza. I am a second year medical student at Chippa College of Medicine. And today we have Dr. Ali Najam. And thank you so much for joining in, and thank you so much, sir, for taking out the time. So Dr. Yeah. Ali Najam is an internal medicine physician at Reading Hospital. He's also a Shifa alumna who's been a very go-to person for students for mentorship. And here's the cool part: he and his wife nailed the couples match together, providing that success in medicine is even better when you've got the right people by your side. Today, he's here to challenge how we think about learning, but because in his world, it's not just memorizing facts, but it's truly understanding them. So let's give a warm welcome to Dr. Ali. Over to you, Dr. Ali. Assalamualaikum everybody. यार बहुत अच्छा लग रहा है seeing everybody's name and a lot of people are have joined here. कुछ काफ़ी familiar name भी हैं ज़्यादातर. Unfortunately मैंने दोनों थर्ड ईयर को ज़्यादा पढ़ाया था, तो some of them I think आप लोग सेकेंड ईयर ज़्यादा हो. I'm very glad कि आप लोगों से. अच्छा, मुझे अपनी वॉइस ऊंची करनी है. 1 second. Am I audible? Yes, Dr. Ali, you're audible. I can hear you. All right, ठीक है. ठीक है, ज़बरदस्त हो गया. तो यार अभी हमारा जो आज का सेशन होएगा, we'll just kind of I'll try to keep it as interactive as it can, because ज़्यादा लंबा होना is like इस तरह की एक one-sided talk wouldn't help you a lot. So wherever you can, type in chat boxes में या unmute करके आप लोग reply करें. At any point we can have a discussion and we'll just take it from there. ठीक है? Let me just share my allow. Okay, wait, window, entire screen. All right. आप लोग को नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? Yes, sir, we can see your screen. Okay. So again, formal say thank you for your very kind introduction, Elisa. So basically, मैं जी यहाँ पे मैंने लिखा है because mainly I always try, especially when I'm giving college given talks, I'm trying to identify as a senior. So I'm from the class of 2021. हम लोग कोविड में थे, तो कुछ मेरे क्लास वाले शायद कहें कि हम लोग 2022 में किए थे, लेकिन हम क्लास ऑफ 2021 है. हमारे हुडीज भी उसमें भी ये लिखा था. And you find my class fellows आगे पीछे, they are also very actively involved in mentorship. So if you ever come across them, if you feel awkward reaching out to them, you can always ask me. I can connect you with them. आज के हमारे गोल्स क्या हैं? हमारे आज के गोल्स वी आर बेसिकली हम लोग दो एसेंशियल चीज़ें करेंगे, विच इज़ कि आपकी जो भी बेसिकली यू आर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू लाइक हाउ टू डू, ओ मैं मॉड्यूल्स कैसे टॉप करूँ या फिर मैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कैसे टॉप करूँ. आई वांट टू टॉक अबाउट सम वेरी कोर फीचर्स जो कि आपको आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करेंगे. Regardless आप जो भी चूज करते हो या जो भी आप करते हो, because life works in a funny way, you don't know where you will end up. However you are in this profession, तो you should be prepared कि आप एक कंटिन्यूस आपकी उसमें ग्रोथ हो. तो हम उसके बारे में बात करेंगे, कुछ कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं. और हम सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहे, हम वी आर टॉकिंग बियॉन्ड मेडिकल कॉलेज. तो you know and so this is like, this is not the kind of thing कि मैं आप लोगों को एक cheat code नहीं दूंगा. This is not your average YouTube video. Okay, oh I did this and this happened, I started taking notes this way and my life changed. It's not going to be like that. It's a very straightforward talk and it's meant to be for you. तो आपको किसी भी point में कुछ हो, मुझे एक issue ये है कि मैं अब आप लोगों के साथ साथ
चैट बॉक्स नहीं मुझे नज़र आ रहा, तो आई जस्ट कीप ऑन इंटरमीडिएटली चेकिंग इट. इसका कोई तो तरीका होना चाहिए. वेट 1 second. All right, I'll keep checking in. Also, Mazhar Ali, I am well. How are you? I just saw your message. All right. मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोग को अभी तक? Yes, sir. आ रही है. All right. मेरी सारी स्क्रीन नज़र आ रही है, which मायने means नहीं हो आप कि लोग अपना you बता रहे हैं you तो can. मैं आपको बता भी सकती हूँ बीच में. हाँ हाँ प्लीज़ बस मुझे बता देना, ठीक है? That would be great. Yeah. So okay, हम वापस आगे जाते हैं. All right. तो कुछ ये डिस्क्लेमर्स हैं बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि दिस इज़ नॉट योर गाइड टू एकेडमिक एक्सेलेंस, बिकॉज मैंने कभी उससे एकेडमिक एक्सेलेंस परस्यू नहीं की, मैंने बहुत सारी डिस्टिंक्शंस नहीं ली, यू नो I've just been kind of there. But the purpose is to understand the true north of your medical education. कि आपकी medical education का मकसद क्या है? Going forward, what you should be taking home from your day-to-day basis. जब आप रोज़ STDs के लिए जाते हैं, आप रोज़ लेक्चर्स देते हैं, आप हर 4-8 हफ्ते बाद एक मॉड्यूल का एग्जाम देते हैं, हर 2-3 महीने बाद एक आईपी देते हैं, तो व्हाट शुड बी द टेक होम मैसेज रादर देन काइंड ऑफ आप क्रूज में उसके थ्रू जा रहे हैं, व्हाट शुड बी यू बी टेकिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस अवे फ्रॉम इट. और आपको उसमें से सबसे अच्छा नेविगेट किस तरह करना है. नेविगेट इन द सेंस नॉट जस्ट काइंड ऑफ गेटिंग थ्रू दोज एग्जाम्स, बट आपकी मतलब पर्सनलाइज कैसे हो सकता है. इवन तो अल्टीमेटली हमने एवरीबडी वुड हैव, मुझे सबके साथ बैठ के एक जरा कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी इंडिविजुअली. अलीज़ा जो सोचती है उसका एक फ़र्क होएगा, प्लस जो सारा सोचती है, प्लस जो फहाद सोचता है, प्लस जो मज़र सोचता है. एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू व्हाट दे काइंड ऑफ, उनके पढ़ने का तरीका क्या है. और आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट विद यू गाइज आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन एज वेल. पर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स अगर हम टच कर लें आप लोगों को समझ आने अपने लिए, तो दैट वुड बी ग्रेट. और दिस इज़ नॉट टू से कि हम एकेडमिक एक्सेलेंस की बात नहीं करेंगे, लाइक अगर आप ये प्रिंसिपल्स अपनाओगे तो दैट वुड बी इट, बट दैट वुडंट बी माय मेन एम. इट वुड बी समथिंग अ बिट मोर बिगर. And so with that, let's talk about big picture. And this is where it's going to get interactive. So मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा आगे पीछे, but पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या लगता है, and you just have 15 seconds to fill the chat box, so we're going to be moving very fast. आप लोग क्या लगता है, what do you think is the purpose of your medical education? मकसद क्या है आप लोग की पढ़ाई का? फील फ्री टू चैट में लिख लो, या फिर to become good doctors. किसी ने अनम्यूट करके to help the needy, very good. To heal people, very good. Take 5-10 seconds more. Let's think about it. To save lives, very good. And to become a doctor where I can confidently also provide care to the people closest near to me. To become a god. The purpose, to serve humans, medical education, skills and empathy, to serve, medical serve my country. Very good. To stand in society, to have a better life with meaning and humility. Very nice answers. So that if someone comes up to you with some signs and symptoms, you would be able to treat them. Fair, when it's also Ramna, like, बड़े अच्छे answers हैं यार. And so that's kind of what we're covering, right? सबसे पहले लोग ये होगा कि भाई obviously डॉक्टर बनना चाहते हैं. कुछ लोग होते हैं to make my loved ones proud. जो आप लोगों ने सबने इतने अच्छे आंसर्स बोले, मैंने बस off the top of my head जितने मुझे आए. But basically all these responses, and abhi because we're a bit short on time, so I would love to go through all of them. These are all like very noble things. These are all very nice things. And I know for a lot of, like, आप सब इतनी मेहनत करके इस point में आते हो, so it will be very true for you. So having said that, और ये मैंने किसी का response miss तो नहीं किया, very good. Next question. अब think of जो आपने बोला है अभी, just wherever you are, just think again 15-20 सेकंड लगा के. Does that tie into your daily readings? Does that tie into your जो आपका रोजाना का process है पढ़ाई करने का, या हर 4 weekly process of giving exams, IPs and so on and so forth? ये motivation जो आपने अभी mention की है, does that come up on a daily basis, or does it just come up when the question is asked?
Guys, there is no correct कोई गलत आंसर नहीं, मतलब you can just answer whatever you think. Some days, yeah, but not always. Fair, fair. Honestly, no. No, I think I get burned out. Not necessarily. Nope. It merely becomes keeping. Not really, not exactly. Every time I see the hospital. All right. No, it's not dying. I think that's what I'm worried about. I want to talk about. Okay. Even if the studying is so overwhelming, we decide to study to take pass. Fair. Um, सो दैट्स एकदम से मतलब मेरा पूरा एक्सरसाइज का मकसद ये था कि ओके लेट्स जस्ट थिंक अबाउट थिंग्स. ठीक है, अभी तक हमने कोई बहुत मुश्किल बात नहीं की. वी टॉक्ड अबाउट व्हाई यू डू व्हाट यू डू ऑन अ डेली बेसिस, एंड देन वी थिंक अबाउट कि हम उसके बारे में कितना सोचते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है. एंड आई I'm going to address all of these कि ये overwhelming लगती हैं, मैं कहा लिख भी लूँ ऑन द ऑफ चांस मैं भूल ना जाऊँ. But I'm going to address all of these कि overwhelming लगती है, मुश्किल लगती है. On the day to day of medical school you forget all of this, module, questions, पढ़ाई, SGDs, attendance का cut off भी अब इतना high हो गया है. It's hard, right? Or second year I would argue is the hardest year, medical college का. So the third question is, do you think you should be thinking about your core intentions? या जो आपने एक पहली question one में जो intention mention की है, do you think you should be thinking about it in a regular basis जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप exams देते हो, या on a regular basis? Do you think that is something you should be doing? And you can answer honestly. Of course you should. Now by virtue it is our duty. Yes. 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 कोई disagree भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है. No. All right. All right. All right. No. And why do you think no? I completely, मतलब मुझे दोनों से कोई, I like both answers, but what do you think no? And why do you think yes? Yes, it's for healthy motivation. I guess the thing is कि like it's a bit difficult कि आप हर वक्त इतना ज़्यादा philosophical हो with all your motivations कि आप कहो कि ओ मैं इतनी गहराई में हर चीज़ सोचूं. Sometimes you're just doing something, you know. All right, motivation doesn't sustain every second. Yep, very fair, very fair, very fair. Motivation doesn't, and kind of habit is what kind of gets you through on a day-to-day basis. I think that this is why it keeps going when it gets overwhelming. Yep, इसी तरह होता है. That is what kind of gets you. So basically again इसका पूरा मकसद ये नहीं है कि to kind of go back and forth as to फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए. But I'm just asked three simple questions. कि आप क्यों पढ़ाई करते हैं? कैसा आप, मतलब how do you think you should be motivated? Or just to make you kind of think. Fourth question. Do you feel like जो आपकी जो भी initial motivations हैं जो कि बात हुई है to help to be a better doctor, to signs and symptoms को recognize करना, all those things, do you think आपके वो exams में address होती हैं motivations in any capacity? Oh, I'm so sorry. I just read the suicide attempt thing because it's only motivation you have for your suicide attempt you chose to in your life. All right. महक हम इसको कुछ डिस्कस, सॉरी मुझे इसकी समझ नहीं, because it's the only motivation you have for your suicide attempt you choose to end your life. That's a bit concerning. Before I go ahead, I would like to address this. Sometimes अगर अच्छी सी guys मेरे अंदर वाला demonstrator kick in कर रहा है, मैं I feel like we cannot proceed with this before exams. Just to feel help is introduced with certain stuff, and that's all right. All right. मैंने महक का नाम लिख लिया. We'll address this towards the end of the talk. Okay.
Not at all. Exams just help us introduce the certain stuff, and then it's up to practice and apply knowledge. It's very good. Like I guess that's the main thing, right? Like exams, hote hain, they do feel a bit um, detached. They don't feel like wo aapko on a day, or at least you don't feel itna. Matlab, when you're doing a question about lipid metabolism, uh, that you don't like at all, and you're wondering, कि, अच्छा, ये कैसे, how can this eventually tie into my original motivation, So, so far हमने अब इन सारी बातों करने का पूरा ये था कि to kind of get your mind into that thinking process, because and we will go into कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, but it's just मैं कुछ बड़े simple से questions पूछ रहा हूँ for you to kind of critically analyze what you do on a daily basis, and that's a big part of what you should be doing. कि आपने you should be able to reflect and understand कि मैं क्या करूँ, because that's the one of the big things about your medical education, and I'll explain आगे as well. So how do you feel about your experience in Shifa so far? Like, how do you find it? I know second year is usually not a good time to ask this question. Um, yes, I've tried it. Yes, Okay, yeah? I wanted to mention we have people from other colleges as well. So Oh, acha, acha. we have people from Al Khan, we have people from Lahore Medical and Dental College and IMDC, and we're not. So I just wanted to make sure कि आपको पता हो कि वो भी हैं यहाँ पे. Oh, okay. Again, yeah, sorry guys, I didn't. My understanding थी only Shifa. It's very nice to have all of you. I do have friends from Khan. I do have friends from Lahore Medical Dental College and from other colleges as well. It's very very nice to have you. Um, Khyber Medical College, yes, nice. I do have a very good friend from Khyber Medical College as well, the seniors, and so again, very nice to have you over here. And so again, मैंने थोड़ा सा इसमें शिफा लिख दिया, but however, how do you like so far? How do you feel आपकी जो examinations हैं, जो आपके सवाल हैं, how do you feel they apply to you based off our conversation so far? I know मैं ज़रा काफी open-ended सी बातें कर रहा हूँ, but just to think about it. Hi, Mike. It's overwhelming. Yeah, yeah. I've heard that. Um, what about anybody else? Just a few seconds to think about it. Just शिफा की second year अच्छी नहीं जा रही. All right, all right. AMC, exhausting. Federal Medical College. Nice. Yeah, this is a very good group. All right, from yes, very good. Um, wow. Okay, Dow. Nice. Dow के बहुत सारे हम दोस्त हैं. Interesting. I'm from KMDC and government long. It can be over. So I guess the overall kind of sentiment is overwhelming. It seems like a lot, especially second year में आप होते हो, आपके ऊपर न्यूरो GI एंडोक्राइन एकदम से फेंक देते हैं. There's so much anatomy. और फिर आपको stupid सी चीज़ें याद रहती हैं. If you're going through GU genitourinary, तो आपको बस of all the things अगर मैं आपसे पूछूंगा, you like हाँ point and shoot कुछ होता है autonomic physiology में से और start करके. And it's very hard to orient yourself to the practical value of your medical education. And as you go into third, fourth, fifth year, आपकी clinical exposure बढ़ता है, and that kind of becomes easy to deal with, but also not like completely doesn't go away. So मेरा this entire purpose of it was कि मैं debunk ना करूँ or not to make you anti your college, but you have to kind of orient yourself. You have to have a sense of perspective कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या है. ठीक है ना? Usually people go into a module or go into a block or go into जो भी आपके semester या whatever the appropriate आप लोग के बनता है मेडिकल स्कूल मेडिकल कॉलेज में जो भी आपकी डिवीजन बनती है आप उसमें जाते हो एंड यूर लाइक बस अब मैं सब कुछ ठीक करूँगा. And then you're kind of go through the cycle of not perhaps doing what you plan to do, and then you're back to square one, and before you know it prof aa jata, and so on and so forth. The cycle goes on. तो उससे थोड़ा सा zoom out करने का purpose है. The entire purpose of this conversation कि आप जब पढ़ रहे हो कैसे कर रहे हो, and we'll do a practical activity as well. But you have to think holistically. You have to think practically कि अब जो मैं पढ़ूंगा इसका क्या फायदा है, क्या इससे मैं क्या करूंगा. So and you have to think about especially मतलब मेडिसिन जब आप पढ़ रहे होगे आप कुछ पढ़ रहे होगे there will be some topics where it's very easy to do. आप blood pressure पढ़ रहे हो, you understand it. But if you are studying lipoproteins in the liver,
कि कैसे वो एब्जॉर्ब होते हैं या कायल कैसे बनती है. इट्स वेरी हार्ड टू मेक सेंस ऑफ एंड इट फील्स मोर लाइक अच्छा ये दिस इज समथिंग जस्ट आई हैव टू डू एज अपोज टू इसका कोई मकसद मे बी लार्जर पर्पस नहीं है समथिंग जस्ट आई एम गोइंग थ्रू इट एंड we're नॉट काइंड ऑफ यूजुअली हम ट्रेंड नहीं होते. आपका जो भी बैकग्राउंड हो ओ ए लेवल हो मैट्रिक एफ एस सी हो जो भी और डिफरेंट चीज़ें हैं हम लोग इतना क्रिटिकली नहीं सोचते अबाउट व्हाट वी स्टडी व्हेन वी स्टडी इट्स एंड बिकॉज देयर इज लाइक अ इस पॉइंट तक इतनी ज़्यादा रेस होती है कि मैंने ग्रेड्स अच्छे लेने हैं मैंने वो करने हैं एंड काम निकल रहा होता है तो यू डोंट थिंक अबाउट इट बट नाउ यू आर एट दिस काइंड ऑफ डिफरेंट पॉइंट लाइक एकदम से गेम चेंज हो जाती है. Now you're not the only guys getting like 90% plus in your class. Now you're not the only person getting A's and A stars. Yeah, jo bhi hai. Now you're coupled with all these people जिन्हें करते हैं. And so you can दो routes होते हैं या तो you can become hyper competitive um, या फिर you kind of take a step back and think कि अच्छा मैं जो कर रहा हूँ मतलब what's the end goal here like ठीक है like even if I make top and if I get a lot of positions how do I become what I need to be and the best possible version of that. And if you allow yourself to think, or also if you like reach to a senior जिस तरह मैं हूँ या कोई और आपके जो भी मेडिकल कॉलेज से लोग होंगे, they will tell you कि maybe the exams aren't the perfect indicator कि आप बहुत ही कोई तगड़े डॉक्टर बनेंगे. Some people do really well in their medical school and outside of their beyond their medical school they're just okay. Sometimes they don't even go into medical practice. So वो necessarily बहुत अच्छी तरह correlate नहीं करती. But then फिर क्या आप लोग what do you focus on? What do you orient yourself on? And this is not one of those talks, okay, let me just think. But the thing is, if you're also bound, you don't have time to study. All right, okay, कोई नहीं message नहीं है. So the thing is कि like this isn't one of those talks जिसमें से आपका take away message होगा ओ भाई exams नहीं करते. So this is not what I'm going to say, but I'm just kind of trying to kind of guide you through the mental process of how to think about what you're studying. And so let me just go ahead. अब आप at this point आप लोग कहोगे भाई हम लोग at this point we only already probably have our first prof under our belt. हम लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है हमने स्कूल में अच्छा परफॉर्म करके हम आए हुए हैं तो यू थिंक वी डोंट लाइक माय इंप्रेशन इज दैट कि आप लोग को पढ़ाई करना नहीं आती है दैट यू डोंट नीड टू that you don't know how to learn. That's not kind of what I'm getting at. And to that I would be like just bear with me for a while. We'll make sense of this. And so let's just talk about the exams. कि अब हमने ये बात एक ही चीज़ हमने establish कर ली कि there is something like not exactly clicking together. Motivations, पढ़ाई, exams, it's all kind of everywhere. So एग्जाम्स में बेसिकली दो तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक होते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चंस जो रिकॉल बेस्ड होते हैं जिसमें आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना होता है. ये नर्व यहाँ है, ये चीज़ ये होती है, इस दवाई का ये नाम है, राइट? So these are what makes 60 to 70% of any given exam. This percentage will go up mostly depending. It will be somewhere between 80 to 90% in exams जो कि आपके हाई स्कूल के लेवल में होते हैं और इनिशियल मेडिकल स्कूल के में होते हैं. सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन को लेके अप्लाई करना होता है. तो अच्छा ये दवाई का नाम है बट ये इस इंडिकेशन में दी जाती है तो आप दैट्स काइंड ऑफ यू आर डूइंग अ टू ऑर्डर काइंड ऑफ थिंकिंग. और थर्ड ऑर्डर थिंकिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है विच टू से अच्छा ये दवाई है ये बीमारी है लेकिन जब ये बीमारी इतनी होती है और ये दवाई इतनी होती है तो यू काइंड ऑफ पुट पीसेस टुगेदर एंड यू हैव अ कॉम्प्लेक्स थॉट एंड यू डू अ क्वेश्चन. सो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स से सबसे ज़्यादा कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? Just again 10 seconds quickly like if you can answer. Third order, fair. Second and third, yep. All of them, very fair. Very good. Third, okay. So again एक और डिस्क्रिपेंसी आ जाती है ना क्योंकि आपके डू यू थिंक आपके ज़्यादातर एग्जाम जिस तरह की कॉम्प्लेक्स थॉट करते हैं या मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्स आर गोइंग टू आस्क यू how to kind of recall information, again which begs another question कि अगर
and it's a very fair expectation to have कि doctors को they should be involved, complex thought making process में उनको involve होना चाहिए, conceptual सवाल पूछने चाहिए. तो क्यों, why do these exams keep on asking? And this is true for the USMLEs as well, by the way, as well as the FCPS exams and the PLAB exams and whatever you kind of want to go ahead. Most likely in any first entry level exam, it will be around 70 to 80%. It will be recall based. 10-20% it will be second order, and only a third of it will be third order. And that the more senior you get, resident level पे आगे जाके exams third order में आने लग जाते हैं. So you have to think about your medical education के it seems like कि आपकी जितनी भी medical education है जो आपका recall based बार बार हम आपको कराते हैं, उसका मकसद ये है, you have to think of it in the same way कि हम आपको बस तैयारी करा रहे हैं. We're just getting you ready for the practical phase of your life where you have to apply this knowledge, which is an entirely different ball game. You know, you can do very good on a module, right? But it would not mean you know the discipline well. क्योंकि जब आपके सामने मरीज होता है, it is very different. It is very different to know कि ऑक्सीजन की फिजियोलॉजी क्या होती है, and it is very different to pick that up on a patient जो कि hyperventilate कर रहा है, या जिसका ऑक्सीजन गिर रहा है, या फिर जो पेशेंट क्रैश कर गया, या फिर जिसकी पेशेंट की चेस्ट की कोई मूवमेंट नहीं है. ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड उसकी एप्लीकेशन होती है. सो you have to think of it in a very like practical तरीके से कि भाई this is the, you know, आप at some point in your life you learned A, B, C. Yeah, sorry Ariva, I just read your message. So third order is basically complex. So that would be कि the question won't ask me कि दवाई का क्या नाम है. The question won't ask me कि किस इंडिकेशन में ये दवाई दी जाती है. The question will say कि ये बीमारी आई है इस स्टेज में, ठीक है, और ये दवाई है इस पर्टिकुलर डोज में, और आप उस सब चीज़ को कंप्यूट करके ना एक उसको समझ के आपने उसको अप्लाई करना होता है. इफ दैट मेक्स एनी सेंस. डज दैट मेक एनी सेंस? Alright, okay, right, definitely, go, no problem. So you have to think of it इसी तरह के जिस तरह आप अपने अल्फ़ाबेट सीखते हैं. At some point in your life you learned A, and then you learned that there's B, then you learned there's C, right? And that was a process. आपके लिए मुश्किल था. But eventually it became second nature to you, and you started speaking words, then you started speaking sentences. And so it was greater than the sum of its part. ठीक है, उसके अंदर ग्रामर आ जाती है, आप जब जुमले बोलते हो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, फिर आप जुमले में जो आप अपना थॉट प्रोसेस डिलीवर करते हो. नाउ एवरी टाइम जब आप लोग मुझसे बात करते हो, यू डोंट थिंक अच्छा ए होता है फिर बी होता है और बी और ए बन के एक ऐसे प्रोपोजिशन बनता है. You know, like this is now something that is intuitive to you. So this may be a very dumbed down way to explain it, but that's kind of how that's what the expectation is. जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हो तो आपको we want you to be just familiar with terminology, with processes, with physiology, ताकि आप उनको रीजन करके अल्टीमेटली पेशेंट्स में अप्लाई कर सको, जो कि आपके अल्टीमेट गोल है मेडिकल एजुकेशन का. So, you know, all of your medical education, especially right now, is just getting you ready for that application phase. And ultimately, that is the purpose of it. However, the caveat is कि आप मेडिसिन में there is no end of. समझ रहे हो, आप जब से होता है ना, like आप, and I feel like मेडिकल स्टूडेंट्स खास तौर पे इनके लिए बड़ा फेमिलियर होता है. आप जब ओ लेवल या क्लास 8-9 में आते हो, मैट्रिक या जो भी आपने किया हुआ है, तो आपसे बात की जाती है, बस बेटे ये कर लो, पेरेंट्स कहते हैं कर लो, फिर इक्विवेलेंस सेट हो जाएगी, फिर तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, फिर सब कुछ हो जाएगा. फिर आप कहते हो अच्छा हो गया, फिर नेक्स्ट आता है, फिर आप मजीद आगे करते हो. then it's like a donkey with an apple in front of it. Now आप बस walk करते जा रहे हो कि भाई, you know, and there's always so there's always the next thing. Wait a second. Basically, we need to do all the way that is being talked to. It's just about how we manage it. Yes. So ultimately, it's not just basically. So the process of application is a very complex one. अच्छा, मेरी आवाज़ slow आ रही है? Is that true for everybody? So it's perfectly fine for me. आप join कर ले. Once, I guess. All right. तो वंश आप रिजॉइन कर लें, मैं इसी स्लाइड पे हूँ, यही पॉइंट मैं कर रहा हूँ. तो फॉर वाइल तो बेसिकली देर इज़ नो, आपका ना अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मेडिसिन इतनी रैपिडली इवॉल्विंग है. आप एक ज़माना था जब डॉक्टर्स वुड लिटरली टेस्ट यूरिन एंड दैट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर. ओ ये यूरिन मीठी है, इसको तो डायबिटीज़ है. दैट हैपेंड. ये प्रैक्टिशनर्स करते थे ग्रीक टाइम्स में.
हमारे पास टीबी का इलाज नहीं होता था, बच्चे जब फीवर के लिए आते थे तो हम उनका ब्लड ड्रेन करते थे, एंड वी थॉट दैट यूज टू ट्रीट फीवर्स। पेशेंट्स जो स्किज़ोफ्रेनिक होते थे उनके सारे सारे दांत निकाल देते थे, क्योंकि उनको लगता, हमें लगता था एक डेंटल ईटियोलॉजी है टू देयर मीनिया, जो समाने को, दिस यूज्ड टू हैपन इन हार्वर्ड 100 years ago, लेस देन 100 years ago। ठीक है, हम लोबोटमाइज करते थे, लोबोटमीज वाज लिटरली रनिंग एक एक थिक सी नीडल शेप थिंग फ्रॉम द फ्रंटल लोब ऑफ योर ब्रेन, और लोगों को लगता था इससे आप ट्रीट करें पागलपन को या फिर स्किज़ोफ्रेनिया को या ऑल दीज मेंटल इलनेसेस, इवन डिप्रेशन को, पीपल वुड ट्रीट, दे थिंक दैट वाज क्यूरेटिव। That was the standard of care. Even electrical convulsive therapy, which is still something we practice today. And I'm not saying it's barbaric, because it's not barbaric anymore, but it used to be a very, very violent process, and that used to be the standard of care. So medicine has changed so much over the years, and it will continue to change in the face of AI, in the face of rapidly evolving technology, हमारा concepts of genes, हमारे concepts of DNA, हमारी immunology, cancer is being revolutionized as we speak, हमारे पास जो forms of modalities of treatment हैं. So the only reality of medical education is कि आप पूरी जिंदगी सीखते रहोगे. If you are in the clinical environment, कुछ core चीजें होंगी जो कि same रहेंगी, but a lot of it will change. कोविड के बाद इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, यू वुड नो, लेकिन अगर एक मायोकार्डाइटिस या इस तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स अब कोविड की कॉन्टेक्स्ट में और सेटिंग में काफ़ी चेंज हो गया, वैक्सीन्स का कितना ज़्यादा चेंज हो गया, एवरीथिंग इज रैपिडली इन्वॉल्विंग। सो देयर इज दिस फैलेसी, राइट, कि आपको लगता है वो बस मैं सिर्फ वो कर लूँ, एंड ये आगे तक चलती रहेगी, ओ मैं सिर्फ FCPS कर लूँ, ओ मैं सिर्फ स्टेप 1 कर लूँ, you will never be done, like, unfortunately. And I mean this in the most exciting way possible, because there is so much to learn, there is so much to do, and the value of your medical education goes much, much beyond in any given exam. And this beautiful field that you're about to enter, it is so much more than you just being able to regurgitate facts. It's actually, that's the least it aspires to do. It's not just, oh, fever, 60-year-old, diabetes, yeah, it's not a knee-jerk feel. You're supposed to think about it in depth. You're supposed to अपने patient को अपने best possible चीज provide करने के लिए you have to have an understanding of their disease. जब आप history लोगे, physical exam लोगे, that is a very different part of your medical experience. तो and you will find this, आप लोग जब इंशाल्लाह house job करोगे, आप लोग जब clinical rotation, house job mainly I would say, clinical rotations में भी you will find some people are really good, like वो बेड साइड में बहुत अच्छे हैं, वो मरीजों से उनकी बात समझने में बहुत अच्छे हैं, वो उस बात को, साइंस और सिम्टम्स को ट्रांसलेट करना इनटू व्हाट साइंटिफिकली इज हैपनिंग, किस तरह फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ऑल्टर्ड है टू अंडरस्टैंड कि बीमारी क्या हो रही है, वो बहुत अच्छा करते हैं. And some people have a knack for it, some people don't. Either way, you have to learn. Even those who know it have to learn. So, you know, so let's with, अब मैंने आप लोग को एक पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, एंड आई एम सॉरी आई टुक सो लॉन्ग टू मेक दिस पॉइंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लोली, लाइक आप लोग की पार्टिसिपेशन के थ्रू ये होता. इफ देयर आर any questions so far, you can ask me, because now we'll just go into the practical sense of it. If it's becoming very long, if you guys need to take a break, we can do that as well. Mera weekend hai, I'm relaxed. So let me know any questions so far, anything so far, because now we'll dive into कि कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, common pitfalls while studying. I think the part of it that you were expecting to kind of know about. All right, मैं फिर आगे चलता हूँ. So this is how you may be possibly feeling कि मैंने इतने लंबा पॉइंट इतनी देर में मारा, but okay. um, all right, so you've talked about this already कि आप लोग को overwhelming लगता है वो. Okay, is there any particular aspect of medical school that you find most challenging, ताकि I can address that during this talk? Otherwise I'll just go ahead. I feel like मैंने सारी चीजें की होंगी probably. क्या आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है? Is it hard to score? Do you find SCDs hard? आप लोग को प्रैक्टिकल ज़्यादा मुश्किल लगता है? डू यू फाइंड इन पेज जो ऑस्कीज होते हैं, आईपीज होते हैं, वो मुश्किल लगती है? हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनीथिंग, anything and everything. You have 10-15 seconds, you can type out whatever, and I'll try to touch all of it. Biochemistry, yes. The example today is from biochemistry, so hopefully like when में जब हम activity करेंगे तो हो जाएगा. Interconnecting 2 to 3 topics, like different, very good. The hardest part is ritualizing, अच्छा, like memorizing everything. Okay.
balance with drive. Try not to be medically educated. Good performer medical school. Yeah. Yep. Fair. Fair. वाइवाज ओवरवेलमिंग या वाइवाज आर वेरी ओवरवेलमिंग यार मुझे तो नॉजिया होता था अपने वाइवा से पहले और अभी भी होता है मेरा अभी रिसेंटली आई जस्ट गिव अ वाइवा लाइक क्या है अभी तक की खत्म एम्ब्रियो या एम्ब्रियो इज प्रीटी बैड मैं जस्ट आई एम स्पीकिंग नोट साथ साथ पीयर प्रेशर वेरी वेरी गुड Sir, people did send in questions in my DMs as well. और उनमें सबसे common question ये था कि they're not able to like retain as much stuff as they need to और उसकी वजह से they struggle a lot with their scores. So that's one of the questions that I got a lot in my DMs. Very good. Very good. Muscles, nerves. Very good. Very good. So I'll try to touch on all of them. But just some loose pointers. Like balance. अच्छा, so balance seems like a big thing, though. Volunteering, research, and personal life. And we'll talk about all of these. But basically, for example, अब मुझे integration वाली बात बहुत अच्छी लगी थी. So it's a very intelligent thing to bring up. तो आपकी जो इंटीग्रेशन है ना और विच इज काइंड ऑफ कम्स बैक टू कि आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है जो आप चीज़ें पढ़ते हो दैट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू फाइंड यू नो एंड ऑल ऑफ दिस एसेंशियली आप जो भी डिसिप्लिन पढ़ रहे हो बैलेंस इवन बेसिकली कम्स डाउन टू बीइंग नंबर वन एफिशिएंट विद द टाइम यू हैव ठीक है यू विल रियलाइज कि आप पूरे दिनों में बैठ सकते हो यू कैन बन के आप एक हर्मिट बन जाओ आप बहुत सारी पढ़ाई करो पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे रहो यू नो बट दैट्स नॉट काइंड ऑफ द गोल इट्स नॉट कंपैटिबल विद लाइफ आप लोगों ने सॉरी मैं इसको आगे पढ़ आप लोगों ने यू नो यू गाइस गोइंग टू लाइक दिस अ वेरी कॉमन थिंग इन मेडिसिन पीपल जस्ट होल्ड ऑफ देयर लाइफ पर्सनल लाइफ ठीक है तो पर्सनल लाइफ में यू ऑल्सो हैव टू लाइक यू हैव टू मेक फ्रेंड्स यू मतलब व्हाट मेक्स अ पर्सन हैप्पी व्हाट मेक्स अ लाइक आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव रेड दिस प्रॉब्ली आप लोगों ने कहीं सुना होगा पर दुनिया की सबसे जो एक मेजर स्टडी हुई है जो साइंटिफिक स्टडीज हम कहते हैं वो हार्वर्ड में हुई थी और वो एक मल्टी जनरेशनल स्टडी थी वेयर वी फॉलोड पीपल फ्रॉम 1930s ऑल द वे टू द प्रेजेंट टाइम और उन्होंने अब हैप्पीनेस एक इतनी सब्जेक्टिव चीज़ आप साइंटिफिकली कैसे मेजर करते हो राइट आप ब्लड स्ट्रीम में डोपामीन लेवल्स तो नहीं मेजर कर सकते आप मे बी मतलब देर इज नो वन लिटमस टेस्ट फॉर इट ना कि पीएच डालो वो इतनी हैप्पीनेस है इस तरह तो नहीं होता इट्स अ वेरी नुआंस थिंग दैट यू कैन काइंड ऑफ मेजर बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द सेम बट उस सारी साइंस का बेसिकली जो एंड गो होम मैसेज था कि इट वॉजेंट अबाउट हाउ योर सोशल स्टेटस इट वॉजेंट अबाउट हाउ वेल यू डू in your professional realm it's not about how much money you make it's not about how you know how good looking you are how athletic you are and all those like superficial aspects of life it's really about relationships relationships with your family and the quality of your relationships which is why we have you know we have billionaires who struggle with mental health we have actors who struggle with mental health and we have quiet people jo ke janitors hote hain they're very happy with their life so it's just happiness is one of those gentle things that you can't kind of just examiner literally has all right all right so um तो इन सब का बेसिकली ये होता है कि आपने नंबर वन यू हैव टू पुट अ टाइम टू स्टडी यू हैव टू हैव अ मेथड टू स्टडी यू नीड टू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बाय इट यू नो एंड the more organized you are the more you have a method that works for you the better you will be in all aspects of this enables to if it's to be able to interconnect which is a very core thing basically मेरी practical value क्या मैं क्या पढ़ रहा हूँ and how to reason through that we'll touch on that as well Vivas unfortunately, if you are someone who socially struggle करता है, who is not the most like intuitively social person या extroverted person like I was, social pressure. I feel like we don't talk about this enough. आप जो लोग ये एक awkwardness होती है या जो social anxiety होती है या जो घबराहट होती है when you're talking in a public setting, it's very real and it's very handicapping especially like I can only talk for myself मैं मेडिकल कॉलेज से आया था मुझसे बात ही नहीं की जाती थी स्पेशली आप ऊपर से बॉयज ब्रांच में होते हो फिर एकदम से मेडिकल कॉलेज में सारी लड़कियां होती हैं और आपकी तो बिल्कुल आदत ही नहीं होती बात करने की एंड यू आर सो वियर्ड एंड लाइक आई फेल्ट सो वियर्ड तो मुझे उसमें से निकलने में और करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी बट योर टूल्स एंड आई कैन ऑल्सो स्पीक लाइक आई कैन से दैट मेनली फॉर शिफा में बट लाइक आई एम श्योर बाकी मेडिकल कॉलेज में आई नो आगा खान में आई नो हर जगह ये अब आ रहा है कि SGDs का एक फॉर्मेट आ गया स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस का सो दोज आर योर टूल्स
That and social activities, आपने अपने आप को रोज challenge करना है to be in uncomfortable situations until eventually you start having, you literally fake it till you make it. There is no way around it, and I would recommend doing that as early as possible. You can come after medical school, you will be in the professional realm, you will have to give an interview, whether you आपने शिफा में हाउस जॉब करनी है या आपने होली फैमिली में करनी है, जहाँ पे भी आपने करनी है, आपको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ इंटरव्यू देना पड़ेगा. And interview decides everything. You could be the perfect candidate on paper, but if you are not confident, if you are not able to articulate well, not speak clearly, you will not be able to do well. Unfortunately, that is the reality of your life, and you're like, oh my god, मेरे ऊपर एक और ये pressure आ गया, but that is something you have to do, and you have to deal with it as a medical student. कोई 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 भी फेस्टिवल हो रहा है, कोई भी पोस्टर प्रेजेंटेशन हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, क्लास में एचजीडी हो रहा है, ऑन अ डेली बेसिस डू दैट. That will help you with your vivas, that will help you with real life, and that will help you. If you put yourself in that situation enough times, you will be fine, trust me. um, Coming from someone जिसने इसके, and that is a very real issue, and I'm sure जो actual जिन लोगों को हो रहा है उन्होंने तो टाइप भी नहीं किया होगा chat box में. So please just kind of address that. So पढ़ाई के बारे में, how do we study, and this is kind of like, ये मैंने picture ली थी, and I've spent my fair time in the library at Shifa. So where do you go to like study? And obviously by study we also do, there's a lot of drama, there's a lot of deep talks, there's a lot of vaping, and there's a lot of other stuff as well that's happening in when you're going to the library, when you're अपने मॉड्यूल से पहले आप पूरा सैटरडे वहाँ पे स्पेंड करना जा रहे हैं, या आप अपने एग्जाम से पहले, तो you do end up, and so that's one of the major things, like you don't want to spend एक पूरा दिन वहाँ पे, you need to break your time efficiently. तो अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं या आप कहीं भी बैठने जा रहे हैं, तो पूरे पूरे दिन का कोई नहीं है, मतलब आप you have to spend time with your family, you have to spend time with your friends, you have to keep your interests. You have to do outside extracurricular activities as well, because those are important for your heart and soul and for your professional growth as well. So number one, आपने so don't do library all days, don't do that. Like you have to have, मैं सुबह आप जा रहे हैं तो आपके पास एक बहुत क्लियर प्लान होना चाहिए कि मैंने ये करना है, मैंने इतना पढ़ना है, और मैंने ये चीज़ करनी है. दैट इज़ इट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. लाइक आई वुड से कि सबसे पहले आपके टाइम ब्लॉक्स बहुत एफिशिएंट होने चाहिए. सिमिलरली आप शाम को घर आते हैं तो इट डजंट मीन कि ओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी का इशू ये होता है कि लाइक व्हाट डू यू, हाउ डू यू मीन, लाइक वी नेवर डिफाइन इट. हम कभी अचीवेबल गोल्स को नहीं करते. हम कहते हैं हाँ मैंने शाम को ये चैप्टर पढ़ना है. क्या पढ़ना है उस चैप्टर के बारे में, क्या आपने करना है? आर यू गोइंग टू डू क्वेश्चंस, आर यू गोइंग टू just make an outline for it, are you going to watch some random YouTube videos, या फिर आप procrastinate करोगे, you'll watch videos about studying, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे notes बनाने चाहिए. एक वे दो YouTuber होगा and they'll talk about I did this and that changed, don't do this, do this, how to study for 6 hours within half an hour, and इस तरह की bullshit, for lack of a better word. You will have all of the, and none of these people are genuinely interested in making you better learners. ठीक है? Every person, like for the most part, 99% on the online space, whoever you will find, nobody is really interested in kind of genuinely helping you. There will be the occasional academic people, there will be occasional YouTube channels इनकी best maybe philosophy ये थी कि आपको help करें, but there will not be any of those. So don't waste your time. You need to think critically, you need to analyze yourself, and you need to set some goals. And that's a very, it's a very, you, there is no scrolling past it. You have, it's a bit uncomfortable जो है. So you stop doing this. And if I'm not talking about what you're like मैंने mention ही किया, so whatever you're doing, stop it. Right? Like just don't do it. Don't highlight and reread and highlight everything. Don't keep on writing notes. I feel like everybody, हम जो सब आते हैं, खास तौर पे मेडिकल कॉलेज से पहले हमें नोट्स बनाने की बहुत आदत होती है. मुझे बहुत ज़्यादा थी, with pointers and diagrams and sticky notes. आपकी बनी हुई एक लंबी सी, and you're like, oh बस मैं अपने नोट्स पढ़ता हूँ और वो करता हूँ, और इसमें आपने अपनी annotations की हुई हैं. It doesn't work. You can't do that anymore. And even if you're managing to do it so far, it won't work आगे, because you'll be covering so much, and that will become a limiting factor. If you start writing everything down, it won't work. You have to realize and start thinking of information and challenging yourself, or understanding your information और उसको कैसे करना है. तो you have to package it. अब मैं आपसे, और इसीलिए मतलब जब आप मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो you have like this big गाइटन पड़ी हुई है, very big anatomy की book पड़ी हुई है.
Guyton is a reference book for physiology. No one should expect you to know all of it. It is a reference book for physiology people. There should only be some key principles जो आप उसमें से सीख रहे हो जो कि आप अप्लाई कर सको. Same with biochemistry, same with anatomy. आपको anatomist बनाने के लिए नहीं हम पढ़ा रहे हैं. We are teaching you some principles of anatomy कि आप medical student जब आप आ रहे हो तो आपके मरीज को देख रहे हो तो you can orient yourself. तो these are again the value of them is not for them कि आपको उनको एक एक चीज आती हो. ठीक है. एंड द इक्विवेलेंट ऑफ दैट वुड बी कि मैं आपको जब ए पढ़ाता हूँ तो मैं ए अल्फाबेट जो हम आपको हर पॉसिबल सिंटैक्स नहीं पढ़ाता. यूजुअली ए अच्छा ये वर्ड में लगता है इस तरह फंक्शन बनता है, इसका इस तरह वर्ड बनता है, इस तरह सेंटेंस यूज होता है, इस तरह प्रोपोजिशन यूज होता है. गो ऑन, that's the practical value of your education, right? So stop doing all of these things because they don't work. Like I could not revise if I haven't highlighted or compiled notes. Fair, and you can feel that way, but eventually, and like still, like you will still make some notes, but these aren't. What I mean to say is like these aren't notes that you are making like verbatim from the book, every paragraph, करके. So that's the clarification. Make notes if it helps you think clearly, but outlines, key points, गलतियां जो आप ज़्यादा करते हो, things that you forget, make notes of those, you know. But again and again highlighting कि पहली दफ़ा आपने chapter को highlight किया yellow में, then you're reading, you're underlining it with the pen, then you're reading it, you're doing it with an orange pen. It's not the highest way to it's not the best possible way to study. It will still get you through the thing, but it won't get you through everything. So the first thing you have to do is you have to understand आप किस तरह के learner हो. तो आप बस Google search करो, Reddit में भी आपको मिल जाएगा, but the first one, the education planner one, this is a pretty good one. Figure out what type of learner you are, because again no person is the same. अभी कुछ लोग कहेंगे मुझसे notes के बगैर नहीं होती, कुछ कहते हैं मुझे highlighting के बगैर नहीं होंगे, कुछ कहेंगे मुझसे YouTube videos देखे बगैर नहीं होता. Everybody is different. There is no one thing that will work for everyone. So do this quiz, right? Just search it up and figure out whether you're a video learner, you're an audio learner, whatever that suits you best, okay? And go from there. Try to adapt those strategies, okay? Generally, audio visual is the way where we are as a generation. मैं तो आप लोग से फर्क generation हूँ, but generally. Then strategies. Again, ये एक exhaustive list नहीं है. Explore what works for you best, but it has to be time efficient and it has to be active. ठीक है. Reading and rereading is a bit passive, but yes, if you close the book and you try to recall it and memorize it, that becomes an active thing. So, but generally a good way is कि आपके पास pre-test हो, आपके पास guided review हो, आपके पास कोई भी review book हो जिसमें सवाल हो. You start doing those questions. Do questions. Questions will challenge because they will usually package the information in a context. तो आपको अगर पूछा जा रहा है कि ओके एम्ब्रियोलॉजी का एक सवाल आ रहा है, but you will get that in a more packaged, in a more clinical scenario. Usually questions are more in clinical scenarios, so that will help the information stick. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस की बात करते हैं और आपको एक ऑलिव शेप मैस है और आपको एक वो डायग्राम सा याद है, बट वंस यू सी अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लाइक अ बेबी कम्स टू यू इन 3 to 4 weeks एंड हैज वॉमिटिंग जो कि प्रोजेक्टाइल है और दूर निकल रही है, and so that way you will remember embryology much more better. You're like, oh yeah, I remember कि अच्छा जब वो हमारी जब मिसफोल्डिंग होती है उसकी GI की, तो तब वहाँ पे एक होता है, एक मरीज प्रेजेंट करता है इस तरह. That will be a much more helpful way to kind of know if everything's not that important to know, then why are we being taught this much? So pretty fair question to ask. I think every discipline, so the way it's kind of structured over the years is कि आपको हर एक discipline के through जाना होता है. And it used to be different, like अब आपने anatomy करनी होती है, वो करनी होती है, और हर discipline के जो leaders हैं उन्होंने अपनी एक expectation रखी हुई है. तो भले लेकिन जो ओवरऑल होएगा ना उस एग्जाम में, मे बी यू आर नॉट डूइंग वेल इन दैट एग्जाम, बट इन दैट दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. और उसका जो की आप जो सीखोगे ना, लाइक वंस यू हैव गॉन लाइक 3-4 years अहेड, जब आप अपने क्लिनिकल उसमें आओगे तो उसमें से आपने जो कोर चीजें सीखी होंगी ना, इट्स ओनली आफ्टर यू डू सो मच कि इतना याद रहता है आपको, if that makes any sense. And they've made it that way, so it's not like you will need to know the exact way the neural tube forms. But yes, you need to know कि neural tube defects किस तरह generally form होते हैं, और फिर that will help you understand neurology के concepts like Chiari malformation,
herniation, क्यों एक foramen magnum होती है, उसके through क्या जाता है, and how it kind of came across. So you know, so initially you won't be able to like always talk about कि अच्छा neural tube इस तरह बनी थी, fold हुई थी, इस तरह cells migrate किए थे, cells के ये pheochromocytome, pheo cells इस तरह बने थे, adrenal cells इस तरह बने थे, medullary cells इस तरह बने थे, but they will have some इसमें से inkling रह जाएगी that will help you in treating patients better, and that's how it's kind of designed. So there, that's why it's made. Is that 3D videos are best for embryo? Yeah. So I hope that answers your question. If it doesn't, we can always like मैं end में time रखूंगा and you can revisit that as well. So always teach. This is the most, this is the best way you can do. There is no other way around it. You know, मतलब questions, everything works fine. But if you have nothing, कुछ भी नहीं है, you are on your, you know, आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है, the best way, and that's kind of the philosophy of small group discussions. कोई भी आप topic पढ़ते हो, ठीक है, teach it and ask questions. And there is no stupid the more simply you ask, the more simple questions you ask, the better it is. I do not mean to be like कि आप irritating हो जाओ, आप हर चीज़ पूछें, सर ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये कैसे होता है. There is a balance. Like सोचें, analyze करें, and then ask why. You know, and we will go through this activity together later as well. Reason and reflect. आप चीज़ों को सोचें just in their practical value. If you are talking about, आप एकदम से आपको बता रहे हैं कि मुझे बताओ कि न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है, तो आप उसको सोचो कि आप, why do I need to know this? Will I, you know, मैं इसका क्या मतलब, if I'm being taught this, you know, there is a small chance कि इतनी मुझे शायद हेल्प ना करे, but there's also probably a very high likelihood कि ये information मेरे लिए यूजफुल होगी. किस तरह यूजफुल होगी मेरे लिए? ओके, बच्चों आते हैं, बच्चों को डिजीजेस होती हैं, मतलब आप पीठ में यू हेयर अबाउट लाइक ऑल दीज फाउंडेशंस एंड दे हैव ऑल दीज प्रॉब्लम्स लाइक सेरिब्रल पॉल्जी और इस तरह की बीमारियां होती हैं. आई डोंट नो व्हाट दे आर, बट दैट्स समथिंग टू डू विद द ब्रेन, राइट? So maybe this will teach me exactly what's wrong with the brain, and then then you kind of have a couple of questions, right? और आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क से बनता है कि अच्छा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, एंड दैट्स, और फिर जब आप अपना जो भी चैप्टर का ओवरव्यू होएगा ना, इट विल बी वेरी डिफरेंट. If you just kind of start reading it, everything, then it will be very different. So even if you just read the topic, neural tube defect, right? You just like search and before you kind of dive into the lines, oh, okay, achha. And then the overview will kind of, you will feel like it is talking to you. There is a game. So think critically about it, because that's how the text is usually written, but that's not how we just kind of ऐसे करके हम उसको याद कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, और फिर so don't do that. Like think about it. Keep thinking about it, and that's an uncomfortable and slow process. But in the longer run, it saves you time. It's much more easier to talk about, और आपकी understanding built होती रहती है इस तरह. And then use what suits you. जब आप अपना वो करोगे तो a lot of people, for example, अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ऑक्सीटोसिन जो है उसके 3 मकसद हैं, ठीक है? It's used during labor, ठीक है? आप जब हग करते हो, it's the chemical that comes out. और क्या होता है ऑक्सीटोसिन? ओह हाँ, इट्स हेल्प विद जब ब्रेस्ट लेट डाउन होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों में, इट्स द थर्ड. इन 3 चीज़ों का इट्स essentially the thing, right? I said all 3 of these in a go. Now you need to know, अच्छा, लेकिन for some people, if I tell them, जब वो ऑक्सीटोसिन सोचते हैं, I need them to think of a ox, और वो विजुलाइज करें एक बड़ा सा मुंह करता हुआ ऑक्स, and think about how it is right now. There's a bucket under it and there's milk coming out of it, and also think about a big guy who is hugging that ox, and make that mental image. They will be able to remember it much more better, and that's kind of the philosophy behind sketchy. Like a lot of people are like इस तरह की उनको wild or weird सी चीजें ज़्यादा अच्छी, they stick well because they can remember well and they can kind of reason it. कि अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछता हूँ एकदम से कि ओ oxytocin का क्या, tell me what does oxytocin hormone do, and you're in a viva and you're nervous and you're sweating, so you can just like kind of come up with that mental image of that ox which is lactating and there was a guy hugging it, and you can kind of make those inferences and remember that. So that works for some people. So if that works for you, do that for yourself. Don't rely on sketchy. आप अपने लिए बनाओ. Make these things and make it stick however it helps you. Some people make mnemonics, you know. आप जब ट्यूमर्स पढ़ते हैं एम्ब्रियो में, खासतौर पे HCG अल्फा फीटोप्रोटीन, तो योक सैक ट्यूमर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि थर्ड ईयर में आएगा. तो कौन सी चीज़ किस में हाई होती है, कब बहुत ज़्यादा हाई होती है,
कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, AFP लिवर में ज़्यादा होता है, सेमिना नॉन सेमिना ट्यूमर्स, इन चीज़ों में तो कुछ लोग करते हैं इस तरह, and you will that will help you memorize. So there's a lot of mnemonics that will come around. So use those as well. But like use whatever it is and just memorize information because use songs. Some people use songs. And usually the wilder the idea is, the better it is. So jitna wild or preposterous होएगा, अभी सर हमने ox की example दी, so you should think of a weird big ox. आप उसको सोच, उसको हर sense में लाओ, उसकी आवाज़ आ रही हो, जो मंडी में स्मेल आती है उसको सोचो, and everything, because it sounds weird but it works, you know, it works. And that way you make learning a creative and fun process for yourself. Some people have memory palaces and you can look into what they are. But basically you have this mental space जो आप store करते हैं. अगर आप में से किसी ने BBC में Sherlock देखा हुआ है, that's what he does. He has like a mental space to store things. So you can do, these are very easily learnable mental techniques and you can do that for numbers, values, everything. And it's just like you can train your mind. जिस तरह आप weight training करते हैं ना, तो आप उस तरह वो भी कर सकते हैं. You can memorize a lot of information. So, you know, flash forward, you're in your exams. I've mentioned all of these things, you know. Do reread things. Instead of rereading things, do questions. Pre-test ले लें. There are a lot of like आपको review books मिल जाएंगी. Guyton की एक अपनी review book है. Anatomy, Snell's Anatomy की एक review book है. Gray's student की एक review book है. They have a lot of questions which will test you practically. So if you're done with reading upper limb anatomy, and you feel like, oh अच्छा ये मुझे अभी तक इतनी अच्छी नहीं आती, मैंने रिवाइज करनी है, but I'll just do some questions कि oh हाँ अच्छा median nerve थी, वो ये part करती थी, ulnar थी, वो ये part करती थी, there was something about upper brachial, so you will like kind of know कि मेरे weak spots क्या हैं. And that process of figuring out what your weak spots are is so much more better than you just rereading it or going through the highlighted information. You could switch it, you could reread it again and then do the questions as well, but it serves the same purpose, which is to kind of highlight your weaknesses and know what your weaknesses are. कि क्या चीज़ आपने नहीं की. Use AI. I think my time पे इतना AI नहीं था, but now it's like AI is everywhere, even at a resident level. अभी जिधर मैं हूँ, Reading Hospital में, everybody uses AI a lot, and it's actually pretty good. And people think it's a lazy thing कि आप बस AI से सवाल पूछ लो और डॉक्टर्स को रिप्लेस कर लेगा, but you can't. AI, AI, unfortunately, because of AI, now you have to know more, you have to have more critical thinking and you have to have more holistic understanding of processes than before. So पहले अगर आप चीज़ को regurgitate कर सकते थे, that was fine. But now you have to put an actual effort into understanding what you're doing. And that's the same for teachers as well. Teachers think they're like doing great things by just kind of giving us AI quizzes. That's not true. They will also be compelled to make better quality lectures, better quality talks, better quality lab presentations, and all of those things. They will have to do that as well. So ये है, pre-test books you can get easily available, prints में हर जगह you can order them pretty cheap, मिल जाती हैं आपको 500-600 की. और PDFs obviously, PDFs बहुत आराम से मिल जाती हैं. You can just write PDF in PDF Hub and there's a lot of websites you can get it off of. So another interesting thing, there was a very smart guy with me who used to make voice notes actually. तो वो अपनी एक टॉपिक पढ़ता था और वैसे करके एक अपने लिए ना वॉइस ऐसे बस he would just make WhatsApp में audio notes and he used to do so well and he used to study right in the like वो कम पढ़ता था लेकिन efficiently पढ़ता था, and अभी recently he's just doing really well. So that's something that works. And so just be creative, explore and find your vibe. ठीक है ना. And if you need, you can just, regardless of whatever medical college you are from, and मैं अपना email लो दूंगा, आपने किसी में भी बात करनी हो, you need to reason that out, you can always reach out to me or reach out to your seniors, mentors, जो भी हैं. Last thing, I think a lot of people, what they do is they make it a very moral thing for themselves कि भाई यार मैंने समझना यार, मैंने इसे याद नहीं करना. I don't wanna I don't wanna just know the information. मैं इसको समझना चाहता हूँ ताकि मैं अपने patients का ख्याल रखूँ. I don't think that's a very big proportion of you, but that's some of you. So you will have to understand कि बस वो again memory, जो चीज़ें आपने याद करनी है उनको, और चीज़ों को ना जितना sometimes you take the time to understand them and comprehend, so simply to memorize them and then use that as a kind of like, it's as a tool to reason and talk about other information. For example, आप nerve reflexes के बारे में जब तक आपको पता नहीं है सी से L3 L4 है, S1 S2 है जो reflexes हैं, so you can't utilize that information in, for example, evaluating your patients with neurological disease.
So you need to just know that information, you know, and then you can talk about अच्छा ये spinal cord में इस level में है, so it will just open it up, you know, आपकी, so you just know it, you know. And, you know, और लोग बनाते हैं S1 S2 buckle my shoe L3 L4 जो भी हैं, just get it out of the way. It's not, and I know like a lot of you won't struggle with memorizing, so memorize it with the practical context and just get it out of the way. एंड मैं इसकी एनालॉजी यही देता हूँ कि जिस तरह आप बॉलिंग में होते हैं, तो अगर आप बॉलिंग में इनिशियली आप साइड हिटर्स ना लगाएं तो गटर बॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं. तो the side hitters, the memorizing bit is kind of like side hitters. It helps you stay in the lane. It helps you stay in context. So अब हम आ गए मतलब एक फाइनल एक्टिविटी में. Any questions so far? Anything I get? I apologize. I'm making this very long. किसी को ब्रेक लेनी है, कोई सवाल है, कोई चीज़ करने हैं, because we're just kind of reason through how to study. I have some screenshots from a chapter, biochemistry, and then we can kind of go through it. So I'll just wait 10-15 seconds and sip on my coffee while I wait. How do you manage your time in medical school with courses, side projects, without letting one setback ruin your whole day? Okay, yeah, I didn't actually. मैंने काफ़ी doom mentality में time spend किया as a medical student. I didn't do well in some of my internal exams, और फिर मैं profs में बहुत strict था, फिर मैंने profs में बहुत time ज़ाया किया, and all of us like kind of do make those mistakes. The important thing is, and I'm still learning not to do that. अभी भी मैं अपने डॉक्टर को एक चीज़ प्रेजेंट करता हूँ और मैं पूरे दिन अपने मरीज को देखता हूँ, मैं समझता हूँ और मैं आई एम सो एक्साइटेड टू प्रेजेंट माय प्लान, यू नो, और वो विद इन 45 सेकंड्स मेरा प्लान शूट डाउन कर देते हैं कि अच्छा नहीं नहीं हम ये करेंगे, ठीक है ना, एंड लाइक ओ अच्छा. तो it's the process of learning. Like unfortunately, like fortunately you are as a medical student, then as a resident, आपकी एक्सपेक्टेशंस, तब आप इंडिपेंडेंट, और अब तक जब तक आप एक अटेंडिंग या कंसल्टेंट नहीं बनते, आप अकेले, देयर ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ, यू विल ऑलवेज बी लर्निंग. एंड अनफॉर्चुनेटली जब आप फुली क्वालिफाई भी कर जाओगे, आप तब भी सीख रहे होगे. यू विल मेक मिस्टेक्स ऑन योर पेशेंट्स, यू विल मिस थिंग्स, और बड़ी रियल इम्प्लीकेशंस होती हैं. तो अभी, और ऑस्की से अभी मेरा एक ऑस्की हुआ था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ड्रेक्सिल मेडिकल स्टूडेंट्स का कॉलेज होता है यहाँ पे, तो हमारा ऑस्की हुआ था, और वन ऑफ माय स्टेशंस वाज के आपने चेस्ट एक्सरे एक आई थी 70-year-old फीमेल, एंड शी केम टू यू, एंड यू, आप रात को बिजी थे, एंड वेरी रियल सिनेरियो. आप चेस्ट एक्सरे कराते हो, आप ईसीजी कराते हो, आप कहते हो अच्छा आई एम जस्ट गोइंग टू रूल आउट अ हार्ट अटैक, सुबह मैं कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाऊंगा, मतलब दिस इज अ बिट बियॉन्ड योर स्कोप, बट दैट्स काइंड ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज. रात को आपको कॉल आती है कि इनके ब्लड प्रेशर गिर रहे हैं, आप कहते हो बस कुछ फ्लूइड थे तो कोई इशू नहीं है, बंद कर देते हो. इन द मॉर्निंग द पेशेंट डाइज. ये स्टेशन है बेसिकली, बाय द वे. एंड आपको रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं चेस्ट एक्सरे में तो ये मीडियास्टिनम इतना बड़ा हुआ है, तो व्हाई डिडंट यू थिंक ऑफ दिस, देयर इज दिस डिजीज कॉल्ड एओर्टिक डायसेक्शन. और फिर पैथोलॉजिस्ट भी कंफर्म कर देते हैं कि दैट्स व्हाट हैपेंड. आई मिस्ड इट, देयर इज नो वे अराउंड इट, राइट. सो एंड अंदर देयर इज पेशेंट का बेटा बैठा हुआ है टू टॉक, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम व्हाट हैपेंड. So, you know, like you will, my point being that you will make mistakes, you will have setbacks, and you cannot let it ruin your whole day. Like you give it its appropriate time, you grieve appropriately. ये एक setback था, ये सप्ली आ गई, ये एग्जाम फेल हो गया, ये हो गया, fine. इस एग्जाम में कम मार्क्स आ गए. What do I do now? You always have to think about the next, because the one thing that you can, like, there you can constantly ruminate things and how they're messed up for you and how everybody else is doing well and why you're the only one having this problem, but it wouldn't help. Matlab, that's not the way to go about it. The way to go about it is to learn from it and keep going on. That is medicine, that you are constantly learning. So I hope that answers your question, and we can talk more about it towards the end. अगर आपको कुछ पूछना, how to manage time along with medical school research projects, USMLE preparation. So it basically begins with what I've been talking about. अगर आप अपनी पढ़ाई को efficiently और अच्छी तरह अपने लिए tailor कर लोगे, everything will open up. अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह नहीं करोगे, nothing else will work. If your पढ़ाई is still those techniques, those inefficient चीजें जो आप करते रहते हो, and you're just kind of, you know, struggling a lot, it will take up all of your time, and you won't have time for anything else. Socials, research, modules, connecting, everything, you won't have time for it. So it really becomes with being critical of myself,
अंडरस्टैंडिंग मेरी क्या इश्यूज हैं मेरी पढ़ाई, एंड वंस यू ऑप्टिमाइज योर पढ़ाई के अच्छा आपका एक पढ़ाई का एक फ्लो बन गया है, विल ओपन अप. So that's the kind of way around it. And with profs, like everything, that's kind of the central thing. And then we can go into an entire conversation about research and everything and how to do that. But basically, a little bit everyday consistency and just knowing yourself really well. That's the main thing. All right, so I'm just gonna go ahead. Okay, आपकी फाइनल एक्टिविटी आपकी एसजीडी है या जो भी इक्विवेलेंट है मेडिकल, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में खाइबर में वो जो हम एसजीडी कहते होंगे, जो भी सेशन को कहते हैं जिसमें आपने बेसिकली आपने पढ़ाई करनी, आपने लीड करनी होती है पढ़ाई. एक इंस्ट्रक्टर होएगा आप लोगों का, डिपेंडिंग ऑन हाउ द इंस्ट्रक्टर इज, दे विल प्रोबेबली kind of be like हाँ ये कर लेना ये कर लेना ये कर लेना हो जाएगा. या फिर sometimes instructors will go out the way to teach you, and sometimes instructors won't have studied themselves, so they'll just be kind of monitoring you and guiding the conversation. Whatever is the scenario, आप लोग हाइपोथेटिक सोचेंगे अब आप लोगों का कल एक है और पॉसिबली कल आप लोगों का शायद परसों एक और हो एक्चुअली, या तो जगह छुट्टियां चल रही हैं आजकल, आई डोंट नो. तो आपका एसिडी मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइटरी लिपिड्स, तो हाउ वुड यू काइंड ऑफ गो अराउंड दैट, कि सुबह कल 8 बजे आप अभी दोपहर को वापस आए हो, एंड इन लाइक 15 seconds like you can reply, you can also honestly like unmute yourself and talk, like how would you go about preparing for it? What is your current process? Because this will allow you to reflect कि अच्छा what I mean, because मैंने बहुत सारी बातें की हैं पर उनको हम अप्लाई कैसे करना है. सॉरी मैंने तो ये किया ये. You have an HCD on metabolism of dietary lipids. It's probably something air and lipin caught, or जो भी आपकी textbook of choice है. So how do you kind of go about it? Yeah, हमारे पास reply. I agree what Maria says. So it is critical thinking does help. I hear. Sorry मैंने मैसेज जरा लेट देखा, but critical thinking help करता है, but critical thinking is the most important part of your, so it's a slow process, but it is one that will help you. And but there is a lot of syllabus is vast, right? Like, so let's talk about another thing as well. The syllabus is vast and we'll talk about this some, but there are only a few things they will really ask, and you can figure, like depending on आप लोग का जो भी medical college है, there are ways to figure out what those things that will they will really ask. You can ask your seniors, whatever जो आप लोग की resource है at your local institution. मैं अब इतना ज़्यादा नहीं इस पे बात कर सकता, but they will be a local like resource. So you have to do that. You cannot like look past it. Like do all those things. Those are helping you in the big ones, but almost always do those things. जो कि जिसकी because and we'll talk more about this towards the end. मैंने काफ़ी सारे questions आप लोग के end में रखे हुए हैं, but कुछ चीज़ें जो भी आपका डिसिप्लिन है ना, अब मैं फिजियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, मैंने हर साल 100 बच्चों को ट्रेन करना है, तो मैं कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे पता है कि मैंने इनसे पूछनी ही पूछनी है. मैंने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में मैंने सब कुछ बताया कि कार्बोनिक एनाइड्रेस कैसे बनता है और ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज़ होती है और ए ग्रेडियंट्स कैसे बनते हैं, पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा. आई विल डेफिनेटली आस्क यू ए ग्रेडियंट्स क्या, बिकॉज मुझे पता है इन्होंने आगे जाके काम करना है. इन्होंने आगे जाके पल्स ऑक्स देनी है, तो मरीजों को असेस करना है, तो उसकी एक प्रैक्टिकल वैल्यू है. सिमिलरली देयर आर कपल ऑफ थिंग्स लाइक दैट डू ऑलवेज कम अप, एंड देन कपल ऑफ थिंग्स दैट दे जस्ट पुट इन देयर एंड कि सी कितना अच्छा पड़ा. So I'll watch the lecture, then book, and then solve some questions maybe. Very good. That's a very, very efficient way to do about it, right? So how will so you walk so you watch your lecture, you read a book, and let's say ideally all of you do it. Some of you won't do that. जैसे आप एसटीडी में आ गए हो, आपने कोई पढ़ाई नहीं की, ठीक है, और लिपिड्स पढ़ने की जगह आपने लिपिड्स खा लिए कुछ, you had some KFC instead. How would you now go through this STD? You're sitting in this STD, you haven't studied for it. What's like going through your mind right now? Is it like just यार अब इसके थ्रू निकलना है? Is there anything I can do in the STD to learn better? Anything else? First, I'll go through the LOs. All right. Then read the textbook and cover some missing points. All right. All right. तो कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया. तो assuming चलें आपके पास ये सारी knowledge है, how would your like STD go about? Will you just go over it subheading by subheading? Will you explain it in a narrative? किस तरह चलेगा? Do you ask questions from your अपने जो class fellows हैं? How do you kind of guide an STD through that? और क्या
और फिर हमने exactly पढ़ाई कैसे, how did you read the textbook, that's also something we will talk about. Make a mind map to summarize and recall. Very good, very good. That's definitely a part of what you will do. And let's go. Explain it by scenario or by an example. Very good. So you already know all these things, right? सोचेंगे आपका हो गया, उसमें आपने कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया. Now you are 2 days before the summative, and maybe like अब I'm assuming like आप लोग मेरी तरह, like I'm hoping you're not like me, but like it's 2 days before the exam and you still haven't studied it, और 2 दिन रह गए. How would you kind of approach it? You know कि कुछ questions आने हैं इसमें से सवाल में, time ज़रा कम है. And ask ChatGPT about my confusion. Become the teacher and the student, explain what I understood and question. Like, very good, you're applying what I told about, or you're doing it very good on both counts. I read text rightly, discuss it with my fellows. Very good. Past papers, very good. Past papers is also an important aspect of it. Furqan's notes. I don't know who Furqan is. Koiga Pichita. Summarize all topics from ChatGPT and cover high yield for summative. All right, all right. And so solve max questions for them after reading up on topic. All of them are very good strategies, right? But क्योंकि some of you may not do this, some of you will do it. I'm kind of catering to the student जिसने नहीं किया, तो I apologize अगर ये आप लोगों के लिए redundant है, but then we're going to go through this activity, right? आप लोग टॉपिक खोलते हो, आप देखते हो कि अच्छा मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइटरी लिपिड्स, ये मैंने एरो के साथ बनाया हुआ. मैंने आई whatever version I had of Lipin code, हो सकता है ये चेंज हो, this not be the exact unit or chapter. You go, okay, go into this. And you open the text and you start reading it, and depending on आपको कुछ तो time लगेगा. I don't like, some people will maybe perhaps skim through it very quickly, but एक variable amount of time सबको लगेगा. You before flow charts, yep. So so you already have all those good things, but I'm just kind of walking through for anybody who doesn't maybe have those. So what I've done is कि मैंने, आपने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने भी चैट जीपीटी से पूछ के सारी हेडिंग्स इसकी करवा ली, ठीक है ना? So a lot of you talked about flow charts and summary. So you have all these questions, right? And let's just kind of walk over them. And like, again, it's not a passive process. So it have to be an active process. So metabolism of dietary lipids. इस जुमले पे you have to think about what is lipids. Like मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये क्या फायदा है, क्या मकसद है? Is it मतलब off the top of my head कहते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल इस तरह कोई चीज़ होती है, तो इज इट अबाउट दैट, इज इट मे बी रिलेटेड टू हार्ट डिजीज, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है? So before you even make flow charts and stuff, you're kind of thinking about it. And this is literally how you're thinking about it in a stupidly simple way. अपने आप से आप ये सवाल पूछ रहे हो. Definitions and general properties of lipids. Okay, इससे मुझे शायद समझ आ जाए कि lipids क्या है. Compartmentalization of lipids in the body. Why? What do you mean lipid? मतलब, isn't it in the blood? Isn't it somewhere inside the body? And you'll have a list of all these questions that I've put and towards the next slide. But transport of lipids in plasma, lipoproteins and albumin. What the hell is that? मैं lipids को transport कर रहा हूँ plasma में. I thought blood cholesterol check करते हैं, लोगों का cholesterol blood में नहीं करते थे. Isn't that lipids? Isn't that what it is? So you kind of start thinking, and you're just reading the topics right now, right? But making it an active process. Major physiological role of lipid. हाँ ये पढ़ना, ये पता नहीं मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं, उससे शायद हमें ये समझ आ जाए कि why we're studying it, right? Like there's probably some sort of normal role in it. मुझे तो बस इतना पता था कि फैट्स खाते हैं, वो करते हैं. Clinical significance of lipid metabolism disorders. Okay, so this is basically where I'll probably understand कि कैसे correlate करता है. So even like जब आपने पहली पढ़ी है ना, आपके कुछ सवाल इसमें से आंसर हो रहे हैं. I hope you're getting that process that I'm kind of reasoning and talking about. So even as you're making your flow chart, you're thinking these things critically. और अभी तक हमने एक लाइन भी नहीं पढ़ी टेक्स्ट की, ठीक है? अब आप नेक्स्ट मुझे उसने दिया कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइटरी लिपिड्स, एवरेज डाइटरी लिपिड इनटेक एंड कॉम्पोजिशन. ये क्या है भाई? मतलब अच्छा, कैसे हजम कैसे होता है? हजम करना और एब्जॉर्ब करना सेम चीज़ नहीं होती? और फिर अगर हम इतनी एफर्ट करके इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हम इसको सिक्रीट क्यों कर रहे हैं? और अगर हम इसको अब सिक्रीट करें तो फिर हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? एब्जॉर्ब करने के बाद यूटिलाइज नहीं करेंगे. सी आस्क योरसेल्फ दीस क्वेश्चंस, यू नो.
और मेरा बायस बना हुआ है, मैं तो अब लाइक आई एम ऑन द अदर साइड, तो मैं इतने शायद क्रिएटिवली क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, बट यू आस्क योरसेल्फ ऑल दीस क्वेश्चंस एंड यू कीप राइटिंग देम डाउन. आई हैव रिटन देम डाउन, यू विल फाइंड देम. Processing of dietary lipid in the stomach. Okay, so the first question is like, हम oral level पे क्यों नहीं करते? Like, you know, you've heard about carbohydrates being digested by saliva. Why aren't you digesting this with at the at the level of the mouth? Why are we doing it at the stomach particularly? इसकी कोई खास अहमियत है क्यों? मतलब ये क्या बात हुई? या कर रहे हैं तो नहीं कर रहे, you know, that should be lingual lipase है, अच्छा है gastric में, तो चलो maybe that will be answered, but that's a fair question to ask, right? Role of acid lipases in neonates and pancreatic insufficiency. So what does that mean? Like आप सोचते हो कि अच्छा तो lipids और जैसे उनके साथ डील करते हैं बॉडी में, is that different from men, for women, for pregnant women, for babies? Is it like an age related thing? So you kind of start thinking about it कि अच्छा ये चीज़, अभी सारे बड़े अच्छे सवाल हैं, you know. Role of acid lipases, we talk about cystic fibrosis है, कुछ pancreatic insufficiency है, clinical notice, okay, तो probably कोई बीमारियां हैं, I'll read about them. So you keep making your list, you keep writing out these, or you keep typing these, or you keep doing it. Emulsification of dietary lipids. What the hell is emulsification? Why do we need to emulsify? Or why are we doing it at the level of the small intestine? Why can't we do it anywhere else? ये क्या बात हुई? मतलब ये just started कि lingual लिखा हुआ तो है, तो अब emulsification intestine में क्यों हो रही है? What is the, अगर आप emulsification आप quickly देखते हो, उसे breakdown है, तो ये हमें पहले नहीं करना चाहिए था. Bile, what the hell does bile have to do with any of this? You see, keep making like a list of all these questions. Mechanical mixing peristalsis. तो mixing से हजम होता है? I don't know. You keep making these questions, and I'm still going through this one chapter, and I again, for those who are being bored out of their mind, I apologize, but just bear with me. तीसरा आगे, degradation of dietary lipids by pancreatic enzymes. अब हमने, we went through all this effort of absorbing them. Why are we degrading them? You know, why do we need to degrade them? And pancreatic enzymes क्यों करें? अभी हमने इतनी बातें की हैं, like lingual and everything. Weren't those the ones breaking it down? Is this absorption? Is this degradation? Is this the same thing? You kind of, you know, tease out इस तरह के आप, और अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया. मैं भी, honestly मेरी बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल फारिग है, तो मैं भी बिल्कुल आप लोगों के साथ ही हूँ. Triacylglycerol degradation, okay, cholesterol ester degradation, ये क्या है सारी? phospholipid क्या है? cholesterol क्या है? triacylglycerol क्या है? What does it have to do with hormonal control of lipid digestion? Like, is it the regulation of it? And you keep making these questions and you keep going through this process. And I hope आप लोग अब at this point समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूँ. And I'm not going to walk through all of them, but आपके पास इस तरह करके एक आ जाता है list, and you go through all these, like just read through them, and that will take you maybe 10-12 minutes. But those 10-12 minutes एंड में समरी आएगा तो मे बी, यू नो, आपके पास एक बिग पिक्चर ड्रॉ आउट होने लग जाएगी. अभी ये मैंने क्वेश्चंस बनाए थे जो बस मैंने 5-10 मिनट में बनाए, बट योर लिस्ट शुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. क्योंकि व्हाई आर ऑल लिपिड्स इंपॉर्टेंट? व्हाई आर दैट ऑल दे, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ठीक है, और दे विल बी, यू नो, दैट्स समथिंग दैट यू वांट टू नो. आर लिपिड्स नॉट जस्ट लाइक, मुझे तो लगा था लिपिड्स बस बॉडी के अंदर बस पड़े हैं, किधर है? ब्लड में नहीं होते? हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेजर करने करते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई है, तो इजंट दैट व्हाट वी डू? क्या मेरे नानी ने टेस्ट कराया था कि सुबह खाने खाए वगैरह आपका हमने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करना है, तो इजंट दैट व्हाट इट इज? इज इट बिगिनिंग इन द स्टमक? इज इट बिगिनिंग इन द लिंग? कहाँ शुरू हो रही है? क्यों शुरू हो रही है? किस तरह शुरू हो रही है? आर लिपिड्स द सेम वे इन एवरीवन? क्योंकि हमने बेबीज का देखा, औरतों का नाम जिक्र पड़ा, वी सेड ऑल दीज डिफरेंट डिजीजेस. So what kind of works exactly? Then you go through this. So how does it get from the butter on my toast on my body? Like simple questions. ये कैसे, ये मैं जो seasons canola हम लोग खाने में डालते हैं, मेरे जिस्म के अंदर किस तरह utilize होता है? Very simple question to ask. Do you think you can answer it? I think a lot of you would have studied lipid metabolism at this point. Would you feel comfortable asking this? It's a very simple question. Does it have to be removed from the body? Is it bad for me? Is it good for me? I think it's bad for me because people say lipid ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Or is it good for me? If it's bad for me, why don't we remove it? Like, why am I not mainly removing it from my body? If it was toxic, shouldn't it be removed? Why does it have to be resynthesized? भाई एक दफा काफी नहीं है, मतलब like why, like because one of the steps is resynthesization.
what is malabsorption क्या होती है, so these are all questions that we've made about a particular topic before we've even studied or read it, and we've asked very simple questions. And there's obviously a better way of arranging this and a simpler way of asking this, but I'm just doing this for the sake of example. Dietary lipids और कौन से होते हैं? Are there non-dietary lipids? What does that mean? And like very simply, like if you are 75% water, लेकिन जब आप ऑयल को पानी में डालते हैं तो ऑयल तो ऊपर फ्लोट करता है, so how do we absorb it in our body? So these are very simple questions, but these will kind of help you navigate through your questions. Again, आप लोग at this point सोच रहे हो कि ये बहुत I don't know अगर आप किसी का चैट में आए, हाँ तो like isn't this very exhaustive sir, इतना ज़्यादा हमें क्यों सोचने की ज़रूरत है, इतना तो है वो करना है. That's true, right? Like, but this is how you make learning a critical thinking, logical process for yourself. You could just memorize a few things and give your get it out of the exam. But if you frame it this way, aapki iski zyada, it will be more valuable. It will align with your original kind of thing. Of it will help you clear your exams. It will also help you apply this knowledge to your patients. It will also give you a long-term value. So, agar aap step 1, step 2, ye jo aap log FCPS, whatever you give, it will give a practical context to these, all of these. So you will be able to apply it. किसी का कोई क्वेश्चन है या आई थिंक ओके Turn it off. कोई बात नहीं आई थिंक यप ऑलराइट तो एक लूज फ्रेमवर्क आप लोग के लिए है, यू कैन रेफर टू दिस बट मेक योर ओन. मेरा इस पूरी एक्टिविटी मैंने बहुत लंबी की है, किसी का टेंशन स्पैन 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, बट द रीज़न आई डिड इट वाज कि आप लोग को this is how you should study for your exams, this is how you should study for everything really, because you should be able to think critically, ask questions, be able to teach it basically. So पहला क्वेश्चन like लूज सा फ्रेमवर्क है कि why is this important, टॉपिक्स देखी, सब हेडिंग्स देखी, try and make sense of it as simply as you can. Again, कोई कॉम्प्लेक्स jargon इस्तेमाल करने वाले बंदे में कुछ impressive नहीं है. ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बहुत टेक्निकल बातों में कर सकता हूँ, but it won't serve any purpose. And eventually a very important skill is कि आप अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या होगा. अगर आप अपने पेशेंट्स को बताने लग जाएंगे जी आपकी EKG में जी ST एलिवेशन थी और आपके ट्रोपोनिन्स बढ़े हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि आपको जी MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है, he won't understand that he had a heart attack. ठीक है, or they won't understand what they are. So you need, this is a very important skill, but it's also, it just so happens it's very helpful for you to like kind of understand topics as well. Simple, clear questions, logical questions. Ask them. There is no such thing as a stupid question. कोई अच्छा टीचर आपको ये नहीं कहेगा कि ये क्या बात हो, ये क्या हो. अगर कहते हैं तो गलत कह रहे हैं. Do not let them break the spirit of your learning. Okay? I'm studying like this. Thanks for reminding. The second thing is make a scheme of connections and cons. So आप लोगों ने already flow charts का mention किया, but this is how kind of the mental process flows. So अगर आपने एक flow chart एक paper में बनाया हुआ है, तो that seems like a very brief thing, but this is all that's like जी आप अपना thought process निकाल लो. तो आप जितना अपना thought process को इस तरह करोगे, उतना this is the most important thing that you will kind of do. Easy, आसान भाषा, मतलब जिसको कहते हैं ना हिंदी मूवीज में, like just be very simple. There is no complexity. Start with literally, like अगर आप lipid metabolism पढ़ रहे हो, talk yourself through it. Like you need to be able to explain this in a very simple concept. So that way you will be able to analyze labs well, pick labs well, find patient findings well, physical exams well, symptoms well. If you are very और मेरे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ मैं बहुत करता था कि all of your like जो बिग चंक है ना मेडिकल कॉलेज का, वो है कि जो आपका फिजिकल एग्जाम है और जो आपने सारी बेसिक साइंस में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी पढ़ते हो, उनको इंटर रिलेट करना कि हाउ डज लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी टर्न इनटू अ कॉफ, हाउ डज इंसुलिन रिसेप्टर्स टर्न इनटू ब्लड शुगर की रीडिंग ज़्यादा होना, या आई डिजीज कैसे बनती है, या हाउ डज किडनी डिजीज टर्न इनटू ब्लड प्रेशर. तो ये जो है ना कि आपके पास एक अंकल आ रहे हो कह रहे हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तो हाउ डू यू काइंड ऑफ कोरिलेट एवरीथिंग, दैट इज द इंटीग्रेशन, दैट द पेशेंट्स आर, if you do not know how to apply that knowledge onto patients, you know nothing. And luckily you have until third, fourth, fifth, final year to kind of start doing that. Use simple analogies and props. I cannot, like मैंने जब पढ़ा था और मैंने जब पढ़ाया था, I remember as a medical student मैंने cataracts पे एक presentation दी थी,
और मैंने कैटरैक्ट्स की प्रेजेंटेशन फ्राई अंडे से शुरू की थी और मैं एक अंडा लाया था, बिकॉज जो कैटरैक्ट्स की एसेंशियल पीछे पैथोफिजियोलॉजी है वो ये है कि प्रोटीन्स डी नेचर होते हैं, तो जब प्रोटीन्स डी नेचर होते हैं तो उनका सारा जो स्ट्रक्चर है ना वो ख़राब और जैम्ड सा हो जाता है, और इसलिए वो ओपेसिफिकेशन हो जाती है। तो जब तक वो क्लियर और वो होता है तो इट्स काइंड ऑफ यू कैन सी थ्रू इट, पर जैसे ही प्रोटीन्स डी नेचर होते हैं तो वो एकदम से ओपेसिफाई हो जाता है और कैटरैक्ट्स फॉर्म होते हैं। एंड दैट्स हाउ काइंड ऑफ सो दैट फॉर्म सो एंड इट्स अ वेरी लाइक दैट्स व्हाट यू डूइंग व्हेन यू फ्राइंग एन एग, लाइक आप जब अंडा डालते हो तो एग वाइट होती है, लाइक ट्रांसपेरेंट होती है, पर जैसे आप उसको गरम गरम करते हो तो वो वाइट और ओपेसिफाई होती रहती है, सो यू एसेंशियली denaturing the proteins. So you have a core concept in your mind that way. So use analogies like these and they will help you, and if you can explain something simply, it is a very valuable skill to have. कीप टाइम डायरेक्टेड, डू नॉट बी लाइक मैंने ये पूरा करना है, घंटे में करें। कोई चीज़ आपको लगता है ये अच्छे करें, यू कैन ऑलवेज डू इट बेटर एंड मोर एफिशिएंटली, सो ऑलवेज कीप माइंडफुल कि अच्छा मैंने आई हैव लाइक दिस सिंपल क्लॉक, लेकिन आपको जो भी चूज़ कर दिया आप 40 मिनट्स, हाफ एन आवर, यूजली इससे ज़्यादा लोगों का इतना नहीं होता, घंटा मैक्सिमम होता है। तो उस तरह के चंक्स बनाएं और मैंने इस घंटे में अच्छा ये मैंने कर लिया, मैंने थोड़ा सा फ्रेमवर्क बना लिया, मैंने इस तरह अपने आप 15-20 मिनट, मे बी 12 मिनट्स आई जस्ट थिंक क्वेश्चंस, देन आई रीड द टेक्स्ट एक्टिवली, और फिर मे बी मैं आखिरी 5-10 मिनट में जल्दी चैट जीपीटी में कुछ क्वेश्चंस डाल ली, फ्लो चार्ट्स बना ली, नोट्स बना ली अपने लिए, कुछ लिखना था, कुछ बोलना था, कोई सवाल था जो मैंने इंस्ट्रक्टर से पूछना। अपने इंस्ट्रक्टर्स को बहुत तंग किया करें, दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछें, वो आपके लिए क्लैरिफाई करने, दैट इज़ देयर मेन जॉब। उनका ये नहीं कि आप मुझे समझाएं, दे शुड बी एबल टू ट्राई टू एक्सप्लेन। तो अपने इंस्ट्रक्टर्स को खूब सारा तंग किया करें, ask them difficult questions and they should be able to teach you, guide you. So that's when you kind of keep it, oh I have to discuss this when I'm explaining this in my STD, ये हम बात करेंगे, मैं I'm interested to know what people think about this, oh ये मैंने एक analogy बनाई, does this work as well, मतलब इस तरह की चीज़ है, ठीक है। Do it and do it in a time directed fashion, so always think about time, ये नहीं कि मैंने पूरी शाम, maybe half an hour, ये अदर half an hour जाए गेम्स करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, maybe do other things, so USMLE उस तरह की आ रही थी तो maybe you can do those things, do those. um, Definitely when you're kind of use AI, but like do not use it blindly, ask it to quote its reference, so if it's quoting nature, if it's quoting JAMA, if it's quoting BMC medical education, it's quoting verified sources, so it's fine. But don't ask it कि ये कैसे होता है, just take its word for it, because ChatGPT will just pull information and it will compute it. So it's for you to kind of reason through that information. To the best thing you can do is to ask it for its sources. Sometimes it doesn't have. So अगर आप उसे कहोगे ना, so oil is absorbed this way in the body, right? And I think it goes. So it will give you that answer. It will kind of verify your wrong information. So you have to always ask it for its references and then open that link and read about it. Do not just take its word blindly. Um, Again, we've talked about this. Make the information stick however it suits you. Do that quiz, it will figure it out for you, and just memorize some information that will allow you to talk and to be able to have a higher level of thinking. अगर आपको again nerve roots के नाम पता है, if you know the nerves के नाम, anatomy के नाम, compartments के नाम, you will be able to talk about it कि like अगर आपको यहाँ पे पेन हो रहा है तो you'll just say, oh मुझे यहाँ पेन हो रहा है, but if you talk about, oh मुझे anatomical snuff box में पेन हो रहा है और इधर रेडिएट कर रहा है, तो you can kind of use that knowledge to kind of enhance your reasoning. So definitely do use that. Um, and like the end all message is you're training to be a physician, a doctor, a physician. You're not going to be an anatomist. You're not going to be a physiology professor. Like at least not now. Maybe आप बाद में बनना चाहें. So at that point you can do further training in anatomy and physiology and biochemistry. But right now you have to integrate the principles of all of these to become a doctor. So you'll be studying a bit of physiology, anatomy, biochemistry, a bit of embryology, a bit of pathology, a bit of pharmacology. In core principles, you'll be studying some medicine, some OBGYN, some pediatrics, some community medicine, some social medicine, and you will be in सब का जो एक mixture सा broth बन रहा है ना, that is kind of somewhere what a physician is, and that's depending on the type of physician you work, where you work, the type of training you pursue, the type of career path you choose, that will vary and that will change. Um, and so take home messages, know yourself. What works for me may not work for you. So these are just general principles.
For some people, it will be very nice listening to lectures. For some people, it will be very nice drawing their things out. For some people, it will be flowcharts. For some people, it will be making their own comics. For some people, it will be mnemonics. Whatever works for you, figure it out. But it has to be efficient. It has to free you. It shouldn't weigh you down, and it should help you think critically. That is the only criteria. Use your STDs. Do not waste them. Please, for the love of God, do not waste them. Use them to develop your confidence, use your ability to think and speak clearly. These are so they are very, very closely related. And this is such an essential skill to have on the other. I think most of you will be able to study. I think most of you will be able to get good scores because you are already kind of screened for that. You're itne hyper competitive environments aate ho. I'm not too afraid, but I am afraid how your social skills are. I am afraid how you will be able to talk and articulate well, how you come across as a professional. That's something a bit different, not exactly the same. Uh, डू डेफिनेटली एक आर्टिस्ट जो होते हैं, जब आपके जो कॉलीग्स आपके हाई स्कूल के लोग जो आर्किटेक्चर में गए हैं, फाइन आर्ट्स में गए हैं, they keep something called a portfolio. So they see their artistic skill develop over some period of time. वो अपनी स्किल को चेंज होते देखते हैं. It's basically a notebook or some sort of thing. तो आप एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो रख सकते हैं, पर आप लिखें and it's for you. And you can do whatever version of it that suits you. मतलब some people would even argue like दुआ करना after like या नमाज पढ़ना, उसके वक्त आप थोड़ा सा if you zikr करना. All of these are also methods of reflecting. Whatever suits you, but keep it. For your professional, for your personal, keep it all together, your struggles, whatever it is, so that you can like kind of look back into a few weeks and see where you were and see where you are. It's a very good mechanism and very underrated mechanism. और हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है as a medical resident. हमारे जो main teacher हैं Dr. Donato, who is a medical professor है यहाँ पे Drexel के साथ, तो वो हमें ये कराते हैं. He makes us do it. So if we have to do it, then you should also do it, because if it's relevant to us, it is most likely relevant to you. And these are good habits to have. And it's actually verified कि आपको ये professional growth में आपको बहुत ज़्यादा help करता है. आपकी personality or professional health education. If you look into the literature, it helps you very well. Think clearly. I cannot emphasize this enough. Be very clear. Be very direct. Be very logical. And if you cannot teach it to someone, you probably don't know it. So a lot of people will do well without teaching it to others, but eventually being able to teach it is really kind of the gold standard for knowing anything. Last things, let me just see kuch hai is tarah ka nahi. What is high yield? What is high yield things? And we'll talk about this. So wherever your medical school is, जहाँ पे भी आप हो, कराची, लाहौर, आपने कुछ लोग डाउ से आए हैं, कुछ लोग पेशावर से आए हैं, कुछ लोग उससे भी ऊपर नॉर्थ आए हुए होंगे, कुछ लोग और सिंध के डिफरेंट जगह से आए हुए हैं. ऑल ऑफ यू, आप लोग का एक कॉलेज का एक लोकल पूल होगा, आप उसको अप्रोच करें. सर आपकी तरफ से आई गेस पीछे से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है. अच्छा, एक मिनट. ये मेरी मोहतरमा भी है. सो ओके. तो उसमें बेसिकली आपकी जो भी लोकल पूल है ना क्वेश्चंस का, आपने वो करना है, बिकॉज वो भी आपके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं लोकल, उन्होंने सोचा हुआ है कि ये इन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. कुछ सिमिलैरिटीज होंगी इसमें, जस्ट नो दोस, एक्चुअली एड्रेस दोस फर्स्ट. वो तो बस दैट्स समथिंग यू हैव टू डू. आपने बस करना है. देयर इज नो वे अराउंड इट. डू दैट. डू नॉट बी लाइक ओ मैं सिर्फ वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं तो नहीं करता. सम पीपल मेक इट अ मॉरल थिंग. इट्स नॉट. जस्ट डू इट. आपके जो भी वहाँ के लोकल डिपार्टमेंट के फील्ड लीडर्स होंगे, फिजियोलॉजी के, एनाटमी के, बायोकेमिस्ट्री के, पैथोलॉजी के, फार्माकोलॉजी के, वट एवर देयर फील्ड इज, they will have this notion कि अच्छा ये चीज़ें होनी चाहिए. And some of them will be not same, like thyroiditis आनी चाहिए, एनाटमी आनी चाहिए, लेकिन some people will be a bit extra कि नहीं, मैंने इन बच्चों से ब्रेकियल नर्व ड्रॉ करवानी है, मैंने लंबर प्लेक्सस ड्रॉ कराना है, मैंने इनसे कार्पल टनल की क्रॉस सेक्शन बनवाना है. तो just do those. Whatever those are, whatever those flavors are, do those. And it's the same for exams, like आपके high stakes USMLE exams, and obviously the syllabus is everything, right? But you will get a question of Cushing syndrome, but you will not get a question of maybe too many questions of pheochromocytomas. आपको एड्रीनल एनाटमी आएगी कि मेड्यूला क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, उनके ग्लोमेरुला, जीएफआर क्या होता है, फिसिकुलर आर्ट, रेटिकुलर आर्ट, ये चीज़ें क्या होती हैं.
but you may not get a question on the nerve roots of the adrenal glands, the lymphatic drainage of the adrenal glands, even though they are also fair to say. So like some information is just randomly high yield, and they're probably not high yield उनके पीछे कोई philosophy होगी. For example, lymph nodes and lymph drainages are very high yield for you to know because they dictate the course of a cancer. So that's like the practical value of what you're studying. But sometimes it's not that easy to see. Just know it. और हर टॉपिक ऑफ जो है ना मेडिसिन में आप कोई भी उठा लें अभी हम लिपिड मेटाबॉलिज्म वाले हैं हम लोग उसको पूरी जिंदगी डाइसेक्ट और रिसर्च कर सकते हैं वी कैन डू दैट फॉर एक्चुअली मल्टीपल लाइफ टाइम्स एंड दैट विल नॉट बी इनफ एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेडिसिन देयर इज नो सच थिंग एज एन अनइंटरेस्टिंग पेशेंट देयर इज नो सच थिंग एज a topic that is not interesting the value of that because it's always evolving there is so much to do cell biology इतनी change हो गया आप लोगों को लगता है सिर्फ mitochondrial lysosomes it's changing so much molecular biology इतनी change हो रही है I think DNA transcribe होती there's so much to it and उसकी implications are so much to it so there is so much to every given topic so there is no such thing as that's not interesting enough random unrelated tips so I kind of how to handle peer pressure in medicine especially things like beyond for things beyond grades like side projects extracurriculars okay so I'm kind of in my last slide I'm wrapping up over here so the way to handle peer pressure is getting out of that headspace. The race is very, very long and it's not a race. In the end, you're only just racing against yourself. आपको कल को एक आपके इस दोस्त कितने मार्क्स हैं क्लास का टॉपर वो है in life, things play out very differently. Some people who do well in medical school continue to do well and do really well beyond it. Some people who didn't do well in medical school also do well. Some people who did really well in medical school also do. There is no मतलब peer pressure का basic underlying reasoning क्या होती है कि ओह उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा but end में it's just you like end में you have to आपने बस make sure करना है कि क्या मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ मैंने ये I just want to be a good doctor you know and just you have to get out of that rat race you have to be in your own space and you have to just constantly challenge yourself it's not like मतलब थोड़ा सा metric होना चाहिए कि if you're completely like बिल्कुल ही एक different space में तो it's good like आप अपने friends अपने mentors अपने peers के साथ अपने आप को compare कर लें कि अच्छा इतना तो like होना चाहिए but like don't obsess over it I think most of you will be in the obsessing criteria of it so don't do that you know similar thing with extracurriculars you know आपकी research कितनी publications हो रही हैं doesn't really matter like as long as the publications and research that you are doing means something to you and it's helping you grow um, yep and it's helping you grow and it's helping you get to the place where you want to be and so you have to get out of that headspace is my answer to peer pressure don't tie yourself down with it it doesn't serve any purpose like maybe आप थोड़े से और motivated होगे but it's not lasting motivation you'll just burn yourself out you'll just get tired and you'll just get angry and you'll just get bitter and you won't be enjoying other elements of your life. It's not a very good philosophy to have. So you have to unlearn it. Even though काफी wiring हो जाती है आप MCAT और इस तरह की hyper competitive processes के through जाते हो, but it has to kind of finish. And the sooner you unlearn it, and you will unlearn it, whether you choose to unlearn it as a 30-something-year-old when you have children and you're seeing them go through the same process, or you choose to unlearn it right now, that's your decision. And a lot of that clarity will come if you reflect, if you think, if you write, if you kind of or dua or zikr or whatever your equivalent is ka aapko milta hai. Just you have to think deeply about these things and you will understand it. For me, it was a lot of reading. I read very good books, which kind of guided me through these things. So you can do that as well. If you want to ask for recommendations, I can give you recommendations on that as well. And remember that this is an amazing, amazing field. बहुत बड़ी privilege है to be in it. It is remarkable. It is always evolving. There's so much exciting things to happen. Taking care of patients is such a privilege. You get to be kind to them. You get to understand your workings. It's science, but it's also social. You're working with patients. It's very, very good. Like even though I go and I basically I don't do a very good job every day, but I'm learning every day. But I'm so grateful to be in this field, and you will feel this way as well. And it's not that because I'm here at the US, man. Even as a house officer, I was so excited to be in this field.
So excited to talk to patients, see patients, apply my knowledge once you get out of that uncomfortable phase. And as a medical student, it's a bit awkward, but patient interaction eventually bahut acha ho jata, and it really becomes what you make of it. And even challenging conversations, there is a sense of reward to them once you start like getting the process and what you're doing. And the more you do it, the more get you get. Like unfortunately, there is no way, there's no way to read enough about it कि आप एकदम से prepared होंगे. So that like preparatory field, you're never ready for it. There is always a learning curve जब आप actual clinical medicine में आते हो, or whatever you choose. You know, like आपको research बाद में पसंद आती है, go into research. But it's a very nice field to be in. Think about things critically, holistically. I've mentioned this multiple times. Think deeply and reflect loads. Let me just check. All right. There is no one experience. Sorry. All right. So after this, guys, it's open season. आप कुछ भी सवाल पूछना, हम discussion कर सकते हैं. No, there is no one experience. There is no one failure that can define you. Remember that, or even multiple ones. I didn't score well in a lot of high stakes exam. And alhamdulillah, I made my peace with it. I still sometimes beat myself about it. Um, uh, my wife is witness to that, but you grow, and there is nothing that defines you. So you have to kind of learn that. And this again, the sooner you learn that, the better it is. Be very helpful and kind to each other. It's really the most important thing you have. The connections you form. I think किसी और की कोई conversation चल रही है. But yes, मेरा आखिरी point ये है कि like be kind, be very helpful to each other. It's really the most important thing that you have. To be teach each other. कोई struggle कर रहा है, किसी की supply आई है, help करें. किसी को मुश्किल लग रहा है, don't be like oh about it. आपके साथ कोई क्लास फेलो है जो कि डिटेन हुआ है, don't be weird to them. Be nice to them, right? Like मैंने बहुत नोटिस किया students doing this, so don't do that. ठीक है, मतलब आप उनका ख्याल रखें, आप उनका करें, really form connections with them. यही है, you guys, how you are with each other is how you are with everyone, and essentially how you are with yourself. तो ये बहुत important है. If you can look at it from any point of view, religious or whatever, like just it's very important. Do that, and that's like if there's one thing you learn from this, please let it be. और आप लोग scientists हो, learn like scientists, reason like scientists, ask question like scientists. You're not, मतलब, a preliminary part of being a physician is thinking like a scientist. So you have to compute things, and that's very exciting. मुझे ईमेल करना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक करना है. फेसबुक I'll try to get back to you as soon as I can. Try to keep it concise, to the point. Don't like me write me a very long essay about ये हुआ. मुझे बस बताएं कि आपके सवाल क्या हैं, आपकी difficulties क्या हैं, so that I can address them in a most timely and accurate fashion. Okay, questions, random, okay, how much is research important for you, Emily? Depends which field you're applying to. If you're applying to neurology, if you're applying to pediatrics, if you're applying to surgery, research is a good way to show your interest in the field. It doesn't have to be meta-analysis and systemic reviews. You can do letter to the editors, you can do case reports, you can do case series, and that's like, I wouldn't say, so basically research is important for specialties that need interest in them. All specialties need interest in them. Do med school grades matter? I think if you are maybe detained, that shows in your transcript. But other than that, I don't think, like, unless I think maybe a few programs here in the US do look at it. FCPS में I think कुछ लोग देखते हैं, but I don't think नहीं. I think अगर आप बहुत if you've maintained like pass करते रहो तो it doesn't matter. अगर आप detain हुए और आपका 1 या 2 साल extra लगे हैं, I think that reflects and that can be a conversation, but I don't think बहुत major limiting factor है. In terms of as long as you've graduated, I think it should be fine. So that's all. Anything you guys want to discuss, talk, any questions, anything that doesn't make sense, anything that you don't like, anything that I said wasn't do you feel like this will help you in your life, or do you feel like you wasted an hour and a half, 40 minutes of your life? Is also a reasonable conclusion to come to, whatever you guys think. Which books, in which year should we attempt step 1? I suppose it depends on when you kind of, so again, like मैंने एक चीज sorry mention नहीं की, मैं इधर रह गया. ये मैं पॉइंट में से, मेक अ मेंटरशिप टीम फॉर योरसेल्फ. मेरा कहने का मतलब इसमें ही होता है कि आप एक लोगों को रीच आउट करें
एंड मैं सबको एडवाइस देता हूँ, एंड आई थिंक यू शुड टेक इट, लाइक ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, ऑल योर कजन्स, वो कोई दूसरा कजन्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द यूएस पाथवे, सो कोई जो भी आपका XYZ कज़न है, चाचा का बेटा है, चाचा चाचा जो भी अम्मी अबू के दोस्त हैं, कोई अगर फैमिली है, रीच आउट टू दैम, जो सीनियर्स हैं रीच आउट टू दैम, एक एक्सेल शीट बनाए एंड मेक अ लिस्ट फॉर एवरीवन, एंड ऐड पीपल टू योर मेंटर्स, ऐड सीनियर्स जिन्होंने मैच किया हुआ है उनको ऐड कर लें, जिन्होंने उस ट्रेनिंग ले ली उस जगह पे जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, उनसे बात करें, एंड कीप लाइक दिस टीम फॉर योर सेल्फ, 7-8 लोग या जितने भी लोग हैं जिनसे आप अपनी क्रिटिकल डिसीजन ऑफ योर लाइफ करियर वाली आप पूछते रहते हैं, एंड that is a much better way because you form a relationship with them and then they can monitor your growth and tell you where to go. So again, now let me just go through these questions. In which year should we attempt step one? So अगर आपका like इसमें again इसका एक answer नहीं है, but I think you should try to attempt it end of third year, beginning of fourth year if you want to match straight out of medical school. Again इसमें कुछ factors होते हैं like visa और हर किसी की timeline थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है. But I think fourth year ka beginning is a good time, and then step two would be good time, and fourth year can end final year mein sometime. That would be a good time to kind of do it. Which books help you throughout medical school journey? मुझे शेरवुड फिजियोलॉजी, लिंडा कस्टांजो फिजियोलॉजी बहुत अच्छी लगी थी. मैंने गाइटेन इतनी नहीं पढ़ी थी. दैट इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन टू नॉट रीड गाइटेन, बट इट इज़ द थिंग दैट आई डिड. आई लाइक, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ आता था, तो दैट इज़ वन बुक आई लाइक. एनाटमी के लिए स्टूडेंट ग्रेज, एनाटमी मुझे बहुत अच्छी लगती थी एज अपोज टू स्नेल्स. मुझे अगेन दैट्स नॉट माई रिकमेंडेशन टू नॉट रीड स्नेल्स, बट स्टूडेंट ग्रेज आई फाउंड द डायग्राम्स वेरी हेल्पफुल. लास्ट एनाटमी एक किताब होती थी, हमारे एक सर होते थे, आई डोंट नो इफ ही स्टिल अराउंड, डॉक्टर अरशद, उनको बड़ी पसंद थी, RJ लास्ट. So that is an interesting book. Sometimes it works for some people. It works really well. You can memorize it. I don't know, but like मुझे ज़्यादा, I'm a more of a visual learner. But if you like learning from text, so last मेरा बहुत सबसे क्लास का जो टॉपर है, वो is a PG in surgery right now in Shifa. उसको he swears by last and he still reads last. So whatever book suits you. Snells is another one. KLM के blue boxes मैंने सारे निकाल के staple किए हुए थे, and to this day मुझे वो बहुत helpful लगती है. अभी भी याद है कि सेकंड मोलर के पीछे पे रोटेट की ओपनिंग होती है, तो जब वो इन्फ्लेम्ड होती है तो दैट्स लाइक अ साइन फॉर पेरोटाइटिस. तो उसके जो ब्लू बॉक्सेस हैं दे आर वेरी हेल्पफुल. तो दैट्स फॉर एनाटमी. फॉर पैथोलॉजी आई यूज्ड पैथोमा. पैथोमा इज माय गो टू बुक. उसके लेक्चर्स जो हैं मुझे अभी भी लाइक बहुत हेल्प किए थे, and they also help you a lot in the USMLE pathway. For microbiology, I never read Levinson's. I read sketchy की मैंने चीज़ की बुक्स की थी, and then I did a lot of online lectures and resources. YouTube type मैंने उसमें से देखी थी because माइक्रो उस तरह की थी. इम्यूनोलॉजी मैंने थोड़ी सी रॉबिन से पढ़ी थी, पर मेनली इट वाज पैथोमा. For medicine, my book was Davidson's, but I think Kumar and Clark is also a good book to study from. Or you can just kind of do like pathology आप revisit कर सकते हो. Surgery के लिए मैंने Bailey's and Love इतनी नहीं पढ़ी थी. It was, I don't know अगर इसमें अप्लाई करता आप लोग को, लेकिन Bailey and Love, like you can ask me for further recommendations of books, but so these are textbooks that help me, and then I also read a lot of other books as well जो कि मुझे वैसी शौक था. Reading about medicine, I recommend you guys should read as well. Emperor of All Maladies, The Gene, these are very good books to read about. There is Man's Search for Happiness, एक बड़ी interesting किताब है by a psychiatrist. You can read that. Oliver Sacks की कुछ किताबें. So these are other non-textbook books. If you're into reading, you can read those. What co-curricular particularly look good for the USMLE? I guess volunteering helps a lot, especially अगर आपने volunteer किया हुआ है, especially at SOS. You've worked with community level पे आपने काम किया हुआ है. इवन अगर आपने किसी सेंटर में जाके बस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स किए हैं, बच्चों के वेट्स और हाइट मेजर किए हैं, दैट शोज अ गुड एक्सपीरियंस, especially if you're interested in pediatrics. That's one good thing. Volunteering, I think, is the big one. Research also, like बच्चे research बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल, but there's like this entire systemic review meta analysis का सैलाब आया हुआ है पूरा बड़ा सा. तो I don't know how much those help because मेरे जितने यहाँ पे जितने leaders हैं जिनसे बात हुई है, तो they kind of caught on कि इनके पास पीछे कोई, इसको पेपर मिल्स कहते हैं, तो उन्होंने कोई सेटिंग्स की हुई हैं, बच्चे पैसे देते हैं, करते हैं, वो करते हैं, हो जाता है. सो मे बी लाइक अगर एक सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है जिसने एक मेटा एनालिसिस किया हुआ है ऑन एको लाइक different modality of pacemakers, तो मैं कहूँगा यार he is a bit out of his depth. इसने कुछ इसको इतना नहीं पता, probably like it's not very hard 1+1.
to compute. So I would say in that case, case reports, case series, letter to the editors, these are very good ways of kind of co-curriculars are very good. Having interest is very good. I feel like आप लोग like especially जितने लोग यहाँ पे होते हैं when you're giving interviews, they're not talking about medicine actually. So you're not talking about how medicine changed my life. Oh मुझे medicine बहुत पसंद है. You're talking about कि मेरा favorite band पिंक फ्लॉयड है ये इस तरह की चीज़ें लाइक ओ मेरा फेवरेट मुझे मीम्स बहुत पसंद है मेरा फेवरेट शो मेरा ये है you're talking honestly you're talking about stuff like this like oh मैंने ये नहीं किया वो किया so having a healthy habits is very like unfortunately एक organic चीज़ होनी चाहिए आपके interests organic होने चाहिए पर a lot of people like prefer like earlier मैं मतलब मुझे याद है कि मैं अपने interviews में I'd be talking about baking क्योंकि मुझे बेकिंग का शौक है खाना बनाने का शौक है मैं अपने गिटार की बात करता था मतलब मैंने आई डोंट रिमेम्बर अ सिंगल टाइम मैंने मेडिसिन की बात की हाँ डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस की थी कि मतलब मेरे लिए सबसे मुश्किल क्या था मेडिकल कॉलेज में जैसे मैंने अपने नाना का ख्याल रखा था जब ही वाज पासिंग अवे सो दैट वाज लाइक इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी आई थी पर मेनली इट वाज जस्ट लाइक इंटरेस्ट लाइक ओह आई लाइक टू डू दैट आई लाइक टू डू दैट सो जस्ट हैविंग लाइक अ हेल्दी पर्सनैलिटी लाइक आपकी पर्सनैलिटी ये नहीं होनी चाहिए मैं तो डॉक्टर हूँ so that's not that shouldn't be your personality. Like you should have interests outside of it. You should have friends. You should have like like do whatever. Like जो भी आपको शौक करता है राइटिंग का शौक है लोग पोइट्री का शौक करते हैं लोग निटिंग करते हैं लोग पॉटरी करते हैं लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं like जो भी आपको मतलब whatever your interests are you can do those. Since no pathway defined complete settlement in medical life, how to be sure what pathway to pursue? What's the checklist? Uh, Good question. I feel like it really depends. For example, अब जिस शिफा में इस तरह का कल्चर नहीं है तो द USMLE pathway can be a bit expensive. So some people don't pursue that on account of expenses. But for example, मैं निश्तर में कुछ स्टूडेंट्स के लोग मिला हूँ तो alumni जो है वो उनके लिए स्पॉन्सर करते हैं like they meet, they do interviews and they do sponsor the USMLE journey for you. So it like limitations like I think the big one people talk about is finance, but I think depending on where you are, you can kind of have a work way around it. I think the other thing is like you have to ask yourself like I think the biggest thing with being over here is being away from family. And if you have like a family, if you get married and everything, though, what are the implications of having raising a family abroad? It's like a practical questions and the ones that you need to ask. I think the medical training that you get at इस पाकिस्तान इट्स नॉट दैट इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कोई बहुत तो मतलब you do take care of patients at home as well you take care training हर जगह is like pretty good like यहाँ पे कल्चर थोड़ा सा फर्क है पढ़ाने का वहाँ पे लोग आपकी ज़्यादा किट लगाते हैं थोड़ी सी बेइज्जती करते हैं पर आप मरीज तो देखते हैं आप करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा आपको they kind of coddle you into it and obviously थोड़ी सी थेरेपीज में डिफरेंस है यहाँ पे हार्ट फेलियर के पेशेंट की प्रोग्नोसिस बहुत फ़र्क है पाकिस्तान में थोड़ी सी फ़र्क है but ultimately you're doing very good medicine like either places and that's like आपका learning experience depends on what you make of it. So I matlab uska there is no one answer to it like but that's what my checklist would look like do I want to settle abroad do I want to be away from parents do I want to raise a family abroad if yes like what would be my plan मैंने क्या training करनी है वो करनी है for example मेरे लिए ज़रा ये था कि ट्रेनिंग पाथवे थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट है थोड़ा सा 3 साल में आप यू कैन be done with your medical training internal medicine over here exposure to specialties is a bit different sorry मैं इसको कम कर देता हूँ exposure to specialties is a bit different over here. So that's how the checklist would be. I think it would vary. It's a very long conversation, but yeah, I guess the bottom line is constant exploration and self-reflection. Very well said. Yeah, I guess that is it in a nutshell. That's what it would be, and it's some like I've said in so many words, but yeah, that's a very well summary. I think that's something good take-home message. How can we do electives abroad? Electives abroad is a matter of two things. It depends on what phase you are in when you're applying for your visa. Um, I guess the main thing is like, agar if you're a medical student, so it depends whether you've given your step one or not. If you've given your step one, then electives are a bit different. If you've given your not haven't given them, then planning your electives is a bit different. Um, some people have visas and citizenship. मेरे पास नहीं थी, but like people do, so that's very different because then you can just travel. But I feel like electives करने का main तरीका ये होता है कि the big ones are Mayo, Cleveland,
तो इनकी एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो अप्लाई, एंड इफ़ यू हैव योर स्टेप वन एंड योरसेल्फ यू कैन गो। आई थिंक उनकी दिसंबर में और जून में ओपनिंग्स होती हैं, यू रीच आउट टू देम अगर आपके पास स्टेप वन है। और आई थिंक आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम चाहिए होता है। आपकी एक फ़ीस लगती है, अब आई थिंक $200 या $300 इस तरह कुछ है, and you have to go there. They don't matlab, invite you, they don't give you a ticket and everything, but that is one way to do electives. If you have graduated, you're done with house job, या आपका वीज़ा फंस गया, जैसा मेरा फंस गया, मेरा वीज़ा ही नहीं लग रहा था, रिजेक्ट होता जा रहा था, तो आई गॉट पोस्ट, मैंने तो उस चक्कर में हाउस जॉब कर ली। तो it's a bit different than you do observerships, and observerships is mainly reaching out to people you know. You can buy observerships as well, but I don't recommend doing that. People, there are a lot of like predatory people जो कि यहाँ पे आपसे बहुत सारे पैसे लेते हैं, and it doesn't serve any purpose. So basically electives लेने का फिर तरीका ये होता है कि you reach out to senior people, you reach out to online forums, एक अपना का ग्रुप है, अपना जो पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिका है, they help you get electives. We were able to get an elective through it, and then even if you get into one place, that opens up into a lot of places. So it's a very dynamic process. So once you go there, और आपका वीज़ा कितना लगा हुआ है और इस तरह की चीज़ें मैटर करती हैं. For colleges that like our DAO का ज़रा alumni circle ज़रा और established है, strong है, खैबर का strong है, निश्तर का strong है, हमारा शिफा का ज़रा nascent है और इतना organized नहीं है, तो we were trying to organize it. We still open, like हमने officially alumni association बन गई है, तो we did recently get approved और हमने अपने आप को अपना में भी register कर लिया यहाँ पे. But because on account of being a young college, हम लोग late 90s में हमारा college खुला था, तो we not exactly there in terms of the alumni circle. So depending on which college you are, LMDC का भी एक मेरा actually one of my fellows is from LMDC right now. You kind of it will depend very it will be different for you. Okay, electives आप कैसे करते हैं? So any other questions? How to balance step one unit preparation with university? Good question. I feel like if you make core concepts, तो आपकी step one preparation generally augment होगी. For example, आज हमने lipid metabolism की बात की, तो if you kind of know that well, lipid metabolism is insanely high yield topic in step one. It will come. You will have a few questions from it. So number one, go form good concepts. Whatever you're doing, wherever you are, have good concepts. That will help you. And the other thing is have a method for prep. So that is to say, like आपने कुछ core चीजें करनी है. Maybe read 3-4 pages of first aid a day. मतलब you make a timeline for yourself. For example, आप second year में, आप third year में, you're like, अच्छा मैंने एक goal रखना है. Which goal is कि मैंने third year के शुरू में अपना step one देना है. Then you dilute it down into small achievable topics, which is like Rose, at most maybe you'll be able to give 10-15 minutes realistically. So in 10-15 minutes में maybe you're going to start reading first aid. First aid आप 3-4 pages करोगे, cumulatively it builds up. Over the span of 6 months, 7 months, you would have finished your first reading of first aid. Another way is कि like आप question bank खरीद लो या आप उसको download कर लो from other resources जिस तरह लोग करते हैं. You can kind of you do those questions, particularly for example, अगर आप UWorld, if you buy the UWorld, तो उसमें there are particular fields, lipid metabolism के, so you can do those questions, and then those questions are the high yield questions for step one. So you'll get done, and you'll be studying that for university. You'll be done with that for first day, step one, and you kind of इस तरह patch करके आप आगे पढ़ के अपनी तैयारी पूरी करते रहते हो. तो वो that's one way to do it. So these are different ways to kind of do it. There's not one way to do it, but yeah, these are some ways you can do it. Your questions? All right, thank you, Sarah. Yep, the transition to residency is very hard. काफी चीजें हैं, but अल्लाह का शुक्र, I think it's going fine, considering आप अपनी पूरी life बर्बाद में. I miss you seeing you guys as well. अच्छा लगता था seeing you guys around. So I hope all of you are doing well. I hope this helps you in some capacity. Feel free to reach out to me anytime you need to. Again, be happy, be excited. We are here for you, आपके seniors. We are here for you, and for other जो भी medical students जितने भी थे, you can always reach out to us. We are all in the same boat. हम सब वहीं पे थे जहाँ पे आप लोग अभी हो. So all the best. ठीक है? If there any.
Allah Hafiz, Allah Hafiz. All the best, everyone.